working as a freelancer or the highway expert. So all of you know that we are conducting this training program on use of waste material in highway construction on online mode. This training program has already been started on yesterday, the 5th of September. So today is the second day of this ongoing training program. Yesterday we have discussed on use of fly ash in embankment construction. Today also we will discuss on the use of fly ash, but today basically we will discuss the use of fly ash in structural concrete and PQC. So I will request to the participants, please make it a two-way communication. Please ask your questions with the faculty, sir, or clear your doubts. Basically, IHE conducting these type of training program for the interaction between the participants and our expert faculty, so that things can move in a good spirit. Basically, the purpose of conducting this type of training program is that if our government officers are facing a difficulty for designing construction or execution of any type of work, for that they will discuss with our faculty and uh, take out some uh, result from the discussion, so that that result can be enhance the knowledge of the participant, so that uh, the things can be done on site in very good spirit. Today also there will also be a 15 minutes time break at around 11:15 to 11:30. Uh, at the end of the presentation also there will also be a question answer session. However, during the presentation also participant can ask their questions with our faculty, sir. So I will not take much more time. I request Sri Satyendra Kumar sir to start his presentation as well as his experience on the subject topic. Thanking you. Good morning to everyone. Thank you, Sunil Gupta ji, for the invitation, for sharing my experience. Thank you very much. So now we are these are the topic. Is my screen is visible, sir? Is my screen is visible? Am I audible, sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. Visible and screen is visible, na? Yes, sir. Yes. So these are the 8 topics today we have to cover. Use of fly ash in structural concrete and PQC. Full form of PQC is pavement quality concrete or rigid pavement. Then advantages of fly ash in structural concrete and rigid pavement concrete. Then material characteristics, what are the properties of fly ash, which fly ash is acceptable, physical and some chemical also, only the important chemical properties. Mid-design of fly ash concrete, how to store fly ash, how to do batch fly ash. Batching means weighing, है ना, batching plant 1 cubic meter. Then quality control, quality assurance, and what is the acceptance criteria of fly ash and the concrete made with it. Then the case studies where we have used fly ash. The picture on the first slide you are seeing, it is a thermal power plant. So fly ash is produced in a thermal power plant, coal fired. Coal is powdered, burnt in the chimneys. The ash which is get at the bottom of the chimney is called bottom ash. Understand? The ash which goes into electrostatic precipitator, it is a fly ash. Nowadays, most of the thermal plant, they have started collecting fly ash in bags also, because it is widely being used now in concrete. So this is a bag filter house also, bag. Now the cement is collected in bag and they are selling also. So this is the just I am going to start this presentation. This is a half day presentation. So before going to start, why there is a limit for 35%? Why not 50%? Why we add fly ash? What is the technical thing by adding fly ash? What will happen to the cement? So this screen, it show you basically cement consists of mainly 2 compounds. This you have studied in your 12th standard. Tricalcium silicate, dicalcium silicate. Tricalcium silicate set 3 day,
So we do cement testing at 3 day. Dicalcium silicate sets at 7 day. We do cement testing at 7 day. Correct? When these two react with water, they form crystal, gel, hard material, CSH gel, tobermoride gel, plus 25% lime is generated as a byproduct. Here is the role of fly ash. Fly ash is acidic, silicic acid. Cement is a alkaline. When acid react with base, like fly ash reacts with 25% calcium hydroxide, then it will. So 35% fly ash, maximum consume 25% lime. So we cannot increase more than 35% fly ash as per IS code. But as per rigid payment code, not more than 20%. That I will just show you. Hai, where we use fly ash, what will happen actually? What is the need of fly ash? One, why we are consuming calcium hydroxide? If at site chloride sulfates are more, coastal area, sodic water is there, means when you wash your clothes, you cannot wash your clothes. The foam is not coming. That is called sodic water or salty water. If you are adding salty water, you cannot get strength properly. Why? Because all chloride and sulfate, they react with calcium hydroxide, not cement. Please remember. And it is inside the concrete. It breaks the concrete. We get less strength. We get more corrosion. To minimize that, to minimize the effect of chloride and sulfate on the concrete, if we add fly ash, it will consume all your lime. Now, chloride sulfate cannot attack on anything. The basic purpose of adding fly ash is to avoid RCC structure from corrosion. The fly ash, the chloride sulfate attacks on calcium hydroxide. Now, here one negative thing. If you are adding fly ash, your alkalinity is being reduced. This is another disadvantage also. If you use fly ash, suppose if you don't add fly ash, its pH value is 11.5. pH value of concrete is 11.5. For corrosion, the pH value we need 9 or 9.5. So when you add fly ash, its pH do not reduces more than 9.5. Side by side, your concrete becomes totally impermeable. The water cannot enter. If water cannot enter, how fly ash can react with it? Further. Now, to understand the setting of fly ash, setting of cement, you have to sit with your mother. You have to sit with your wife when she prepares curd. Setting of curd and setting of cement, they are parallel. Like if you take a cement, lime, you cannot take too cold lime. You cannot take too warm lime to make the curd. And if you go on shaking, you cannot get good curd. The example is before you. This is a cement particle. When we put water, it is a spherical. It was spherical in nature. It start hardening from the edges. After 60 minutes, without disturbance, this was 50 nanoparticle, same size, but it is coming in a crystal form. The same, it has become a crystal. That is why in the code it is written, we do not do vibration when concrete is, we do not allow traffic also when you're moving. That is why if you are cutting a core, code says if you are casting a cube, then you need a strength FCK plus 3. 43 megapascal is needed. But when you are cutting core, we say no, only 75% is of the characteristic is acceptable. Why? Because the traffic is moving. You cannot control the traffic. And while cutting core also your strength is reduced. You are doing touring for 14 days. So these are the things we take even 75% also while cutting core. So detail I will cover next slide. So we do cement testing. Why? Because there is a tricalcium silicate. It sets at 3 days. Why do we testing at 7 days? Because dicalcium silicate sets at 7 days only. So this is in brief the chemistry of cement I had explained you. Now coming to the, if you use 33 grade cement, 43 grade cement, 50, what is the difference? Can any participant can say, sir, what is the difference between 33 grade, 43 grade, 53? Please, any participant. Boliye, sir. Anyone can help, sir. Please. Anyone who knows
What is the difference between 33 grade, 43 grade, 53 grade? So there should be some interaction also. बोले sir, Ankit Mishra ji, Aniban Acharya, Alok Mani, anyone can tell. Anyone? बोले sir, are you listening sir or not? Am I Sir, audible? heat of sir, हाँ, good morning yes. sir, Ankit Mishra this side. बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा बोला. Heat of hydration. Why? Sir. Because heat of hydration is maximum in the case of 53 grade cement. Another difference: 53 high heat of hydration, 33 low heat of hydration. Any other? What is the difference? Is fineness same or different? Please remember, whenever I will ask you question during the presentation, answer will be given in the slide. Please be careful. I want to be only, you should be attentive only. What is the difference? Fineness of 33 grade, fineness of 43 grade, fineness. Please see the yellow portion. Setting time same. Initial setting time 30 minutes, final setting time 10 hours. What is the difference? Strength. नहीं सर, स्ट्रेंथ तो होगा. What 33 represent? बोलिए सर. What 33 represent? What this 33 word comes from? बोलिए सर. तो सबको मालूम होगा यार. बोलिए 33 कहाँ से आया सर, बताइए. आंसर स्लाइड में दिया हुआ है, देखिए. Why we say 33 grade? Why we say 43? 33 stand for 28 day strength of the cement mortar. 43 grade means 28 day strength, 43 megapascal. 53 grade cement means 53 megapascal. What is the full form of OPC? बोलिए sir. What is the full form of OPC? Anyone? Ordinary Portland cement. Very good. Ordinary Portland cement. What is the full form of PPC? PPC, full form of which is the subject of today? Portland cement. cement. Portland Pozzolana cement. What Portland means? Portland क्या होता है? Do you know what is Portland? Portland is a place, sir. हाँ, एक प्लेस है इंग्लैंड के अंदर. स्टोन है. तो अगर सीमेंट का स्ट्रेंथ उस स्टोन के बराबर हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पोर्टलैंड सीमेंट. प्योर सीमेंट, नो फ्लाई एश. So 33 grade cement, 43 grade cement, 53 grade cement, ordinary Portland cement, no fly ash, pure cement. Same fineness, same setting time, only difference is strength and heat of hydration. Okay? So 33 grade cement, 43 grade cement. Now there is a maximum limit also. Please remember, earlier there was no maximum limit. Earlier we have 3 IS code. Earlier we have 3 IS. Now it is a single code. Earlier we have 33 grade IS 269, 43 grade IS 8112 and 53 grade IS 12269. Now these 3 code have been clubbed here. IS 269 Portland cement. They have clubbed all the Portland cement and they have added 2 more cement for bridges, for pre-stress concrete. 2 more cement, railway cement, sleeper cement, 43S, 53S. 43S strength higher than 53 grade. 43 grade railway cement has higher strength than our 53 grade cement. Please see here, 7 day strength, 37.5 megapascal. Here, 37 megapascal. These cements are 150 rupee more costlier than normal 43 grade cement. This is used for pre-stress concrete, railway sleeper. Setting time double. Setting time double. Fineness almost double. So double fineness, double setting time, 7 day strength higher than 53. These are called 43 grade S cement. S stand for sleeper. Similarly, 53 grade S cement. Correct, sir? So now there are 2 new cement. Further, all ordinary Portland cement from onward 2015,
they contain fly ash also. Now, all OPC cement contain fly ash also only 5%. What is written? Performance improver, mineral admixture, limestone or slag or fly ash or silica powder or anything, only 5%. They are allowed now. Earlier, these were not allowed. How to check? This also I will. So, I think you have understood. बोलिए सर 43, 33 समझ आ गया. One more difference. Why it is a high heat of addition? बोलिए सर. Tricalcium silicate produces maximum heat. Dicalcium produces low heat. So it means in the 53 grade cement, tricalcium silicate is very high. 53 grade cement, only difference in 33 grade, 43 grade, technical difference is only the quantity of tricalcium silicate. This is the only difference. If tricalcium silicate is more, heat will be more, strength will be more, early strength will be more. Correct? So 53 grade cement has 55% tricalcium silicate, 43 grade has this. What C stand for? C means calcium oxide. C means calcium oxide. S means silica. ये देखिए. C means calcium oxide. S means silica. C3S. Dicalcium silicate. 2 CaO, 1 SiO2. S means silica. C means CaO. Lime है ना. तो डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. ठीक है सर. तो नाउ I have a small question. I think who can give me the answer? Why our cements are 33 grade? Why not 32? I am using a 30 grade concrete. I am using a 40 grade concrete. Any RTI person can say, sir, why they are using 43? I am designing rigid pavement at 40. I am designing pilot deck for M40 grade. I am designing pier for M40 grade. Why IS code is asking for 43 grade? बोलिए सर. From where 3 has come? This is okay. 43 represent 28 distance. But why IS code say only 43 grade? Why not 42? Why not 41? बोलिए सर. Any participant? Any participant? Why we have only 33 grade? Why not 32? All values, all code depends upon the field characteristic, whatever you need in the field. In the field, if you are using a 40 grade concrete, this is the bridge, MORTH bridge section. If you go to MORTH, material for structure 1717.71, what is the average strength of concrete, sir? बोलिए सर, क्या लेते हैं सर स्ट्रक्चर में? Anyone? What is the average strength? If I cast 4 sample, 12 cube, what shall be the minimum average strength of the concrete? बोलिए सर. Answer is given in the slide. बोलिए सर. What is the average cube compressive strength? आप काम करते होंगे कि नहीं सर? कई लोग फील्ड में काम करते हैं. आपका एवरेज कंसल्टेंट कितना लेता है सर? बोलिए सर. एनीवन? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया. बताइए सर. आलोक जी, आलोक जी बताइए. और अंकित सच गोत्रा जी, आप दोनों बताइए सर कैसे कर सकते हैं. आंसर देखो दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, आपको रीड करना खाली. ये देखिए रीड क्या लिखा है सर. एवरेज 4 सैंपल का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? द मीन स्ट्रेंथ फ्रॉम 4 सैंपल शैल एक्सीड कैरेक्टरिस्टिक प्लस 3 मेगापास्कल. तो कितना होगा सर? FCK प्लस 3. ठीक है ना सर. तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 43 मेगापास्कल. तो आपका सीमेंट भी 43 होना चाहिए क्या नहीं? इसलिए हमारा सीमेंट भी 43, 33. If I am using M30 grade concrete, I have not to produce M30 grade. I have to give 33 grade. समझ आ गया सर? If I am using M53 grade, 50 for the deck slab, for the girder, mostly we use M50 grade, my acceptance will be 50. Now again there is a small question. Why we say 53? क्या फायदा? when we are doing M50 grade, when we are doing M40 grade, why consultant ask 53 grade? What is the reason? बोलिए सर. What is the reason? What is one more acceptance criteria? What is one more acceptance criteria?
the variation in the sample shall not be more than 15%. Variation shall not be more than plus minus 15%. Suppose I do not take M40 grade concrete from you. If I take only M40 grade concrete from you and you are taking minus 15% also, so my design strength will be less or not? ठीक है सर, समझ आ गया कि नहीं? तो why we take FCK plus 3? The reason is because we have to produce concrete 43 plus minus 15% variation. You can say, sir, there can be variation also. So we are taking 53 grade also. Correct, sir? Next. This is as per structure. This is as per structure. This is for rigid pavement. Same is for IS code. As per IS code, average of the 4 sample must be greater than 0.825 into standard deviation or FCK plus 3, whichever is greater. So FCK plus 3 is everywhere, whether doing a building, whether you are doing a bridge, or whether you are doing a rigid pavement. If you are using a 40 grade concrete at site, you have to give 43 grade cement plus minus 15% variation. Correct, sir? If you are purchasing RMC also, please do not tell RMC supplier, give me a 40 grade concrete. Your consultant will reject that. You have to ask the RMC supplier, give me a 43 grade concrete. Correct, sir? Same thing whether it is a fly ash concrete or if it is a potent poisonous concrete, the testing method will be same. Not much different. One sample can be FCK minus 1 megapascal. One sample out of 4. One sample can be 39 megapascal. Average should be 40 plus 3 megapascal. This is the acceptance criteria for rigid pavement. This is the acceptance criteria for bridges. FCK plus 3. One sample can be FCK minus 3 as per bridges code. ठीक है? In case of doubt, it is clearly written, you have to cut core. Evaluation of core in case of doubt. This is given as per doubt means your cube are failing. Honeycombing was there. You as a consultant, you start work without his presence. Then these are the doubts. So whenever you do concreting, you do ductile detailing, you didn't call the consultant, then he can ask for the core cutting. Okay? So in case of doubt, you have to cut core and then we will see how to. Now, coming to the slag cement. I have told you Portland pozzolana cement. In the case of slag cement, slag is allowed up to 65%. Slag code is IS 12089. Why 65%? Here anybody can say, why we have 65% slag, but fly ash only 35%. The reason is slag also contains lime also. It uses its own lime. So that is why we increase the quantity 65 or 70% also. So slag allowed in slag cement IS 455 widely being used for pile foundation. Only used coastal area. In coastal area, OPC cement is not allowed at all. In coastal area, within 10 kilometer, ordinary Portland cement is not allowed. Only Portland pozzolana cement or Portland slag cement. This is Portland slag cement. Blast furnace slag cement. IS 455. Okay, sir? This is the slag code. Coming to Portland pozzolana cement. What is the IS code? IS 1489. What is Portland pozzolana cement? 70, you can say 65% OPC, 65% ordinary Portland cement, 35% fly ash. Or 90% OPC, 10% fly ash. So fly ash 10 to 35%, remaining ordinary Portland cement. Name of this cement is called Portland pozzolana cement. What is pozzolana? What is the difference between pozzolana and fly ash? There are only 3 pozzolana in our code. Only 3 pozzolana. Fly ash is a pozzolana, slag is a pozzolana, silica fume is a pozzolana. Pozzolana means siliceous material. Silica. What is the definition of pozzolana? Any siliceous material which have zero strength in itself.
fly ash has zero strength. If you put water in fly ash, zero strength. The pozzolana material or the material have zero strength when react with water, but when you add lime, it give you the same cementitious. This is the definition of uh, pozzolana. Correct, sir? So for pozzolana, we can say 28 days strength 33 megapascal, fineness 3000, and fineness of OPC cement 2500. देखिए fineness of this 225 meter square per kg, fineness of 225 meter square or 2250 centimeter square per gram, 2250 centimeter square per gram. ठीक है सर? तो ये आपको थोड़ा we have shown you the history of cement, fly ash also. There is one more super sulfate cement. Suppose you are doing work within a coastal area, within the sea, then more totally sulfate. Then you have to use super sulfate cement. Means sulfate is super quantity. Fineness 4000. Slag minimum 70%. So this is super sulfate cement. IS 6909. Correct, sir? Now, there is one new cement which have come, composite cement. 1 part cement, 1 part fly ash, 1 part slag. 2015, widely being used all over the country. 100 rupee less cost, most economical, most durable, most carbon giving credit, most environment friendly. Composite cement for making sustainable concrete. So 35 to 60% OPC cement, 15 to 35% fly ash. So IS code 1. This is the copy of the IS code. This is the bag sample I have shown you. In Odisha, it is being widely used. Konar, every company they are making. Now this has come in our new Morth book also. Okay, I am involved in. I am a member for MORTH revision. Almost we have finalized 80-90% portion has been finalized. Maybe in Lucknow session you may get the revised copy of MORTS specification, 6th edition. Till now we are using 5th edition. So in the revised Morth book we have put this composite cement. In IRC 15 new code also we have already put this, and in the pocket book already it is there. Pocket book 2019 MORTH pocket book, already this composite cement has come. Correct, sir? Now, how to check adulteration? How to check quantity of slag? How to check quantity of fly ash? How to check adulteration? There are two methods. Either you take dilute hydrochloric acid. I think everyone might be using in your washroom also for cleaning China clay material. So we take 10 gram cement. 50 ml hydrochloric acid. OPC cement 99.9% will dissolve. OPC cement 99% will be dissolved. One method. Second method, take bromoform liquid like chloroform. Its specificity is 2.8. All pure cement has a specificity more than 2.8. Pozzolana 3, OPC 3.15. Any waste material, fly ash, slag, silica powder, they have specificity less than 2.8. So 10 gram cement, 50 ml bromoform liquid, shake well, adulteration will come on the top, pure cement will come at the bottom. So there are 4-5 methods how to check quality of the cement, how to check quantity of the fly ash. Again I am repeating, take hydrochloric acid, OPC will dissolve, fly ash will not dissolve. Fly ash specificity is 2. If more fly ash is added, take bromoform liquid, take that adulterated cement, shake well, fly will come on the top, cement will come at the bottom. Third, find out the specificity. If specificity of the pozzolana cement is 3, it is a pure cement. If specificity of the Portland pozzolana cement is less than 3, it means more fly ash is added. Fourth test, take 1 gram cement in your finger. Take 1 gram cement,
in your finger and just rub it. If you by rubbing, if it is looking like a talcum powder, no fly ash. If you are rubbing like this, some silt looks, it means fly ash is there. So pure OPC cement, take 1 gram cement in your finger. If it is a pure OPC cement, it should look like a talcum powder. Any cement more than 3 months old is rejected. Please read week number. Any cement, pure OPC cement, the marking will be black in color. All fly ash cement marking will be red in color. All slag cement marking will be blue in color. Marking will be slag blue in color. ठीक है, all slag blue color, fly ash red color, same red color. ठीक है sir. So I have shown you the case study also at field. Never put bags more than 14 in number in a one row as per IS code on sampling. You cannot store cement bag more than 14 in a vertical row. You cannot stack directly on the ground. It should be raised minimum 300 mm from the ground. It should not touch the wall. There should not be any humidity in the room. It should be covered, this everyone knows. So this I have shown you how to check the purity. Now coming to our main topic, fly ash. This is the system, Badarpur thermal power plant. This is a chimney. When fly ash burnt, coal fire, then it goes in a different field. Different stages are there. First field, if you can see here, you will find very coarser fly ash. Last, you will get very fine fly ash. Here also, if you go to different field 1, field 2, field 3, you will get different type sizes also. When you club all the fly ash, these are electrostatic precipitator. These are electrostatic. The ash which is collected by electrostatic precipitator is called part 1 fly ash, used for cement replacement, not for soil, not for admixture. The ash which is collected by electrostatic precipitator is called ESP fly ash or fly ash. ठीक है सर. It minimum contains 20% reactive silica. It should contain 20% reactive silica. This is Badarpur thermal power plant. This is the inside picture of the plant. Second, how much quantity of fly ash is produced? If you take powdered coal, 80% of the total ash is generated as a fly ash. 20% of the total ash is generated as a bottom ash. The ash which collects at the bottom of the chimney is called bottom ash. The ash which is collected by electrostatic precipitator, ESP, is called it. When you combine both bottom ash plus fly ash, it is called pond ash or mound ash. Correct? So IRC SP58 for use of pond ash. Okay? So different code also I will explain you. Now we can process fly ash also. If you process fly ash, you can use 35, 40, 50% also. What are the different methods for the processing of fly ash? Grind the fly ash. Temperature of burning should be correct. At proper temperature, its clay structure breaks. The core structure breaks and you are getting more reactive silica. At proper temperature of burning, we can get good quality of fly ash. Like fly ash contain, the normal fly ash contain 20% reactive silica, 80% non-reactive. So basically whatever fly ash you are having, it is only 20% pure. Rest 80% is only nothing. Correct, sir? So when you put exact at optimum temperature, 100% reactive silica you can get. That is called processed fly ash. Type of the coal also. If you are using lignite coal, it contains more calcium oxide. It is not good for use, frankly speaking. Types of the coal, further pulverization of the coal. Sometimes we do shaking also. If you do shaking, like this is a sheet I am showing you. If you take a sheet and then coarser, like we are using grain also, finer particle will go away, coarser will remain at one point.
So we will get two steps. So these are the different method of processing also. And if you want, nowadays ash collection system, most of the thermal plant, they are given to private companies like Ashtec, which is in Bombay. They get collect, they are paying something to the NTPC and they are selling fly ash. Similarly, at every plant there is a private company, and within the plant, any 10 kilometer, if you want to establish paper block factory, the third power will supply, give you most of the thing free of cost or very reasonable rate, because you are using their fly ash, which is creating a pollution also. Correct, sir? So this is Badarpur third power plant. This is collection of fly ash bag. You can see here. Now there are two fly ash. Please see here. Now I am going to detail in fly ash. For concrete, I am taking today class fly ash for using in concrete structure. IS code 3812 part 1 only for concrete. 3812 part 2 only for geotechnical or as an admission only. As a replacement of sand, as a replacement of soil. Part 2. Part 1. What is part 1 consists of again two things. IS 3812 part 1 consists of two fly ash. Class F fly ash, class C fly ash. C stands for cementitious, reactive, more calcium, class lignite fly ash. Contains calcium oxide more than 10%. Here you can use this in high volume fly ash also. Calcareous fly ash, more calcium. Like suppose your coal contains more calcium, है ना? So it is called reactive calcium oxide calcareous fly ash. Siliceous fly ash means F means only pure fly ash. So class F. F stand for fly ash. Normally जिसको की fly ash बोलना चाहिए, that is class F fly ash. Pure fly ash means only silica. If more calcium is there, it is not a fly ash then, and it is only lime then. Less calcium oxide and silica more. This has a pozzolanic property. ठीक है सर? This has a pozzolanic. This has a some pozzolanic, some hydraulic property, some sedimentation, some density. These are. समझ आ गया सर क्या नहीं सर? बोलिए. Any doubt? What is class C fly ash? What is class F fly ash? बोलिए सर. C stand for what? Any participant? बोलिए सर. आलोक मनी जी बोलिए. From NHIDCL. आलोक मनी जी बोलिए. Are you there? बोलिए सर. अंकित मिश्रा जी, आप प्रेजेंट भी हैं कि नहीं सर? आई हैव डाउट. ऑल आर देयर और नॉट? अंकित कुमार RCD. अंकित जम्मू से क्या? बोलिए. ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर ऐसे तो फिर पढ़ाना बेकार हो जाएगा ना सर. हेलो, ये देखो म्यूट किया हुआ है या क्या है सर? बोलिए सर. All should be there. If I ask you some question, you should be alert. Or simple thing. What is class C? यस सर, सुन रहे हैं आपको. रिएक्टिव कैल्शियम ऑक्साइड. रिएक्टिव कैल्शियम सर विनय अगर हाँ, सी का मतलब कैल्शियम ज्यादा है या कैल्शियम कम? क्लास सी फ्लाई एश का मतलब कैल्शियम ज्यादा या कैल्शियम कम? ज्यादा है सर. हाँ, और क्लास एफ फ्लाई एश में, क्लास एफ फ्लाई एश में कैल्शियम कम होगा. नहीं, क्लास एफ फ्लाई एश में कैल्शियम कम होगा. 10% से कम होगा, 10% ये 10% से ज्यादा होगा. ओके, इसको भूलना नहीं है. आपको कई बार आएगा क्लास सी फ्लाई एश, क्लास एफ, तो हमको क्लास एफ फ्लाई एश यूज करनी है. लेकिन तमिलनाडु या लिग्नाइट में जो फ्लाई एश बनती है वो भी यूज कर सकते हैं. बोथ आर ओके. तो ये 3.9 IS कोड का क्लास है. IS 3812 पार्ट 1 2030. ठीक है, तो साथ साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा. आप देखिए बॉटम ऐश क्या होती है? पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश. डेफिनेशन कोड के अंदर क्या दी हुई है? एज पर IS 3812, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉटम ऐश? पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश collected from the bottom of the boiler is called bottom ash. Generally
इसको भी फ्लाई एश बोलेंगे आप। कैलकेरियस फ्लाई एश, क्लास सी फ्लाई एश, अभी अभी आपको बताया, कैल्शियम ऑक्साइड मोर देन 10%, लिग्नाइट कोल से बनेगा, सब बिटुमिनस कोल से बनेगा। जो आपने कोयला देखा होगा जिसमें धुआं ज्यादा निकलता है ना, धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा, सब बिटुमिनस से, और हैज पोज़ोलैनिक एंड हाइड्रोलिक। सो कैलकेरियस फ्लाई एश हो गया, बॉटम ऐश हो गया। अब ओनली फ्लाई एश, एफ फ्लाई एश, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लू गैसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन सेपरेटर, गुड फॉर कंक्रीटिंग। तो कंक्रीट के लिए ये यूज करना है 3.3 का। पार्ट 1 फ्लाई एश, ESP फ्लाई एश ओनली फॉर कंक्रीट पर्पस, ठीक है। माउंड ऐश, व्हेन यू मिक्स बॉटम ऐश एंड फ्लाई ऐश बोथ, खिचड़ी पक गया आपका, सब गंदे इकट्ठा करके जो फ्लाई ऐश बन गया, मोंड बन गया, ढेर लगा दिया, तो वो मोंड ऐश हो गया, ठीक है सर। इन ड्राई कलेक्शन, अगर ड्राई कलेक्शन करेंगे तो मोंड ऐश, वाटर से कलेक्शन करेंगे तो पोंड ऐश। इफ यू आर कलेक्टिंग फ्लाई ऐश विद वाटर, इट इज ए पोंड ऐश। If you are collecting dry, it is a mound ash. If you are collecting fly ash with electrostatic pressure, it is a pure fly ash. ठीक है सर। So these are the terminology also I had explained you. Pond ash, fly ash or bottom ash or both mixed in any proportion conveyed in the form of water. अगर fly ash का water touch कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? Pond ash. Pulverized fuel ash, अब सबका एक कॉमन नाम है, whether it is a bottom ash, whether it is a pond ash, whether it is a fly ash, इन सब का एक कॉमन नाम क्या है? PFA, pulverized fuel ash. Means coal is pulverized for fuel purpose, ash is generated. Coal is pulverized for fuel purpose. क्या करते हैं सर इसमें बताइए? इसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है मालूम है सर आपको? इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है सर बताइए? इलेक्ट्रिसिटी, एम आई ऑडिबल सर? हेलो, बोले सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? जिस आदमी ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की उसको आपको थोड़ा सा बताएंगे। वी टेक मैग्नेट, इफ मैग्नेट इज रिवॉल्व अराउंड ए वायर, देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। So the purpose of powdered coal is to generate steam. Steam revolves the magnet, the electricity is produced. Our purpose is the ash which we are getting from the is called the fly. ठीक है सर? So now pond ash हो गया, pulverized fuel ash हो गया. Now what is reactive silica? अब कैसे निकालेंगे सर reactive silica? Which fly ash is good? Which fly ash is better? Reactive silica means pure cement. Reactive silica means pure cement. In fly ash also 20% is pure reactive silica. If you take 10 gram cement and take dilute hydrochloric acid, तो minimum 20% pure cement or silica should be there. That is called reactive silica fly ash. How to calculate reactive silica? 10 gram cement, 50 ml hydrochloric acid or potassium hydroxide. Whatever the quantity which is dissolved, it is called reactive silica. क्या लिखा है सर? Which is soluble in after treatment with this is called reactive silica. पोज़ोलैनिक क्या होता है? ऑलरेडी आपको बता दिया. पोज़ोलैनिक means silica part in it. When react with water and calcium hydroxide, they produces cementitious material. What is pozzolanic reaction? Tendency to react with lime to form cementitious material is called pozzolanic reaction. अच्छा, एक हो गया रिएक्टिव सिलिका, एक हो गया अनरिएक्टिव सिलिका. जैसे आपका सैंड है, सैंड इज आल्सो सिलिका, दैट इज क्रिस्टलाइन सिलिका. वो फ्लाई एश नहीं है. सैंड इज आल्सो सिलिका, एग्रीगेट इज आल्सो सिलिका, है ना. दे आर क्रिस्टलाइन, they will not dissolve in hydrochloric acid. The particle of fly ash which dissolve in hydrochloric acid is the pure fly ash, soluble in hydrochloric acid. So कैसे निकालेंगे? There is one more method. Total सिलिका निकालो, insoluble सिलिका माइनस कर दो तो soluble सिलिका भी आ जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. Now सिलिशियस फ्लाई एश ऑलरेडी बता दिया. कैल्शियम ऑक्साइड लेस देन 10%.
इसको क्या बोलेंगे? क्लास एफ फ्लाई एश। सिलीशियस फ्लाई एश कैसे प्रोड्यूस होगी? बर्निंग बाय एंथ्रासाइट कोल। वो लिग्नाइट कोल है, ये एंथ्रासाइट कोल है, बिटुमिनस कोल है, नो लिग्नाइट कोल हैज पोजोनिक प्रॉपर्टी, सिलीशियस फ्लाई एश। नाउ so what is the lighter fraction which goes up the chimneys and is caught by electrostatic precipitator is known as, so our today's topic is only on this slide. तो आज हम खाली इसी पोर्शन को, सिंगल स्लाइड को ध्यान से देख लो. द लाइटर फ्रैक्शन, very fine fly ash which goes in the chimneys and collected by electrostatic precipitator is used as class F fly ash or fly ash, have minimum 20% reactive silica which is 80% of the total ash. अगर आप 100 kg कोल बर्न करेंगे 100 kg, तो 80 kg आपको फ्लाई एश प्योर मिलेगा, 20 kg पॉन्ड एश या बॉटम एश निकलेगा. ठीक है सर. तो अब एक पार्ट 1 फ्लाई एश है, एक पार्ट 2 फ्लाई एश है. पार्ट 1 के क्या एडवांटेज है, पार्ट 2 के क्या एडवांटेज है. पार्ट 2 फ्लाई एश क्या है? बॉटम एश, पॉन्ड एश, मोन्ड एश, है ना. पार्ट 1 फ्लाई एश ये वाले ESP फ्लाई, दिस इज पार्ट 1. नाउ फर्स्ट एडवांटेज, इफ आई एम यूजिंग फ्लाई एश पार्ट 1 इन कंक्रीट, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन मींस लेस क्रैकिंग, लेस void, less heat of adhesion, they are spherical in nature, increase workability, workability को increase करेंगे. reduce alkali silica reaction. sometime क्या होता है आपके गोरखपुर में, क्या है, एग्रीगेट के अंदर रिएक्टिव सिलिका आएगा. रिएक्टिव सिलिका मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो डिजोल्व होगा, तो वो सिलिका जब हाइड्रेट करता है तो एग्रीगेट ब्रेक हो जाएगा. ठीक है ना, क्लोराइड एल्कली से. तो हम लोग जब फ्लाई एश डालेंगे तो फ्लाई एश प्रोटेक्ट्स द एग्रीगेट. फर्स्ट एल्कलीज रिएक्ट विद द सिलिका ऑफ द फ्लाई एश, तो माय एग्रीगेट रिमेन्स प्रोटेक्टेड. अगर आपका एग्रीगेट एल्कली सिलिका रिएक्टिव है, यानी एग्रीगेट के अंदर, इसको कैसे चेक करेंगे, ब्लैक कलर एग्रीगेट होगा और उसके अंदर व्हाइट स्पॉट होंगे. अगर आपका एग्रीगेट ब्लैक कलर का है, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे में या जम्मू में मिलेगा आपको ब्लैक या रेड कलर एग्रीगेट और उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट होंगे, है ना, वो है रिएक्टिव सिलिका. अगर आपका एग्रीगेट रिएक्टिव सिलिका है, विद इन 10 ईयर 5 ईयर योर स्ट्रक्चर विल फेल. यू हैव टू यूज फ्लाई एश और स्लैग. द पर्पस ऑफ फ्लाई एश और स्लैग इज दे विल रिएक्ट सिलिका इनसाइड द एग्रीगेट एंड प्रोटेक्ट द एग्रीगेट. फिर जो सीमेंट का सिलिका है वो आपका प्योर बच जाएगा. सो वन एडवांटेज, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन. सेकेंड एडवांटेज, इंक्रीजेस वर्केबिलिटी, रिड्यूसेस सीमेंट resistance to chloride and sulfate. It is widely being used in a paver block for good finishing. अगर आपको फिनिशिंग अच्छी चाहिए, कलर वाइट चाहिए, तो आपको फ्लाई एश डालने से कलर वाइट मिलेगा. पेवर ब्लॉक, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट HPC, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, मास कंक्रीट. सो पार्ट 1 फ्लाई एश कैन बी यूज्ड अप टू 35% in paver block, in self-compacting concrete, in high-performance concrete, in mass concrete, but in PQC only 20%. They reduces permeability also. सबसे RCC स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट है. क्यों? Suppose 25% lime which is being generated, it will go into the curing water. So when you add fly ash, they consume that lime and they block the pores. If you are having a 1% void in any concrete, your strength will be 6% less. Please, it is given in IRC 15, construction of CC road. 1% more void due to crack, due to honeycombing, due to anything, your strength is 6% less. 1% more plasticizer, maximum quantity of plasticizer is only 2%. If you add more quantity, 3, 4, 5%, they will generate more air. Chemical admixture is a liquid soap, they create voids only, and so then you will get the lesser strength. Then bond also, it gives you the very good bond also, the bond between the cement and the sand, you will get a good bond here. Otherwise lime will stick on the surface. अगर आप lime use नहीं करेंगे, lime will hinder the bond between the sand and the cement particle.
So again I am repeating, what is the advantage? Less heat of addition, increases workability, alkali silica reaction, chloride sulfate resistance, for good finishing, for reducing permeability, for reducing air void, getting more and transition bond between the grains. Now coming to class 2 fly ash, pond ash, bottom ash, environment friendly, used as a replacement of sand or soil, as a filler, used as a soil stabilization. We can use 100% in DLC also as a sand only. In DLC we can use even 100%. I will show you. Sorry, 25%. PQC also 25%. Cost effective, economical, durable, as an admixture. Add in the mix. Add a mixture. This is not add a mixture. This is a pozzolan as a sand replacement in concrete. So part 2 fly ash. Now, what is the specificity of fly ash? 2 to 2.4. Specificity of fly ash, minimum 2, maximum 2.4. Particle size around 45 micron. Okay, particle size 45 micron. Now, this is the specification of part 1 fly ash. Part 1 fly ash, carbon content कितना है सर? Carbon moisture content 2% allowed. Carbon content 5% only. Carbon content lime relativity. Lime relativity क्या होती है? We take 1 part lime और 1:3 mix बनाएंगे. If you are getting a compressive strength 4.5 megapascal, it is a good fly ash for concrete. ठीक है ना सर? Take 1:2:9 portion. क्या लेते हैं? 1 part lime, 2 part fly ash, 3 part sand. 1 part lime, 2 part fly ash, तो 1 बन गया और 9 part sand, तो 1:3 mix बन जाएगा. तो compressive strength कितनी आनी चाहिए? 4. If you cannot find compressive strength, there is another method also. Find out the compressive strength. Take 80% OPC cement, 20% fly ash, cast cube. If you get 80% strength of that, it is a good quality fly. 80 से कम नहीं होना चाहिए, है ना? Minimum 8. So these are the fineness of first fly ash should be 3200 centimeter square per gram or 320 meter square per kg. Meter square per kg. Or fine particle, the maximum retain on 45 micron shall be 34%. In other words, you can say 66% passing 45 micron. If it is a good quality fly ash, the fly ash must pass 66% from 45 microns. So these are the only 4 properties. Again, I am repeating, if you are using fly ash at site or if they are using fly ash in a thermal power plant, you can go to thermal power plant, take 1 bag of fly ash, whatever they are using, and please find 3 or 4 tests. First test, fineness by Blaine apparatus. Second is a 45 micron sieve. Third is a, or 4 is a compressive strength, either 4.5 megapascal, or if you compare with a concrete, then you must get 80% strength. These are the physical properties required. ठीक है? Coming to the chemical properties required, ये देखिए, this is as per IS 12381. यहाँ पर these are the chemical properties. Siliceous fly ash, calcareous fly ash, both are allowed. Siliceous fly ash, siliceous means calcium oxide less than 10%. Calcareous fly ash, calcium oxide more than 10%. ठीक है सर? Total silica 70% here. Here total silica 50%. तो 20% lime हो जाएगा. Silicon dioxide 35, 25. Reactive silica देखिए, the silica, pure cement, pure fly ash 20% हो. अगर आप fly ash लेंगे, if you take dilute hydrochloric acid, minimum 20% should dissolve. Carbon content not more than 5%. Loss on ignition is a carbon content 5% तक allowed है. Rest other properties I am not taking, है ना? तो आप लोग क्योंकि सिविल इंजीनियर हैं तो केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाते. These are the
These are the chemical properties of siliceous fly ash, calcareous fly ash. ये उसकी तो 5 हो गया. हाँ, ये दिस इज पार्ट 2 फ्लाई एश. दिस इज पार्ट 1 फ्लाई एश, है ना सर. पार्ट 1 फ्लाई एश. पार्ट 2 फ्लाई एश देखेंगे तो आपको फाइनस 200 का ले, 45 माइक्रोन रिटेन 50. यानी इफ यू टेक 45 माइक्रोन सी 50% ओनली इज अलाउड, 70 नहीं चाहिए. तो कोर्सर है ये बॉटम एश है. कार्बन 7% अलाउड है. रेड बॉक्स को देखो, ठीक है सर. कितना इसमें रिएक्टिव सिलिका कोई है ही नहीं, नो रिएक्टिव सिलिका. इफ यू आर यूजिंग फ्लाई एश एज ए सोयल, एज ए सैंड रिप्लेसमेंट, ओनली डिफरेंस नो रिएक्टिव सिलिका, इट इज ए कोर्सर. और 45 माइक्रोन पासिंग खाली 50. नाउ प्लीज सी द कंपैरिजन. इफ यू सी द कंपेयर, लेफ्ट साइड पार्ट 1 फ्लाई एश फॉर कंक्रीट, राइट साइड फॉर सैंड रिप्लेसमेंट और फॉर सॉइल. ठीक है सर. इसमें देखिए रेड फिगर देखिए, कार्बन कंटेंट 5, कार्बन कंटेंट 7, सिलिका रिएक्टिव सिलिका 20, नो रिएक्टिव सिलिका. इसमें है ही नहीं रिएक्टिव सिलिका. इसमें SO3 5%, इसमें SO3 3%. इसमें फाइनस 320, इसमें फाइनस 200. इसमें 45 माइक्रोन रिटेन 34 यानी 66% पासिंग, इसमें 50% पासिंग. इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है सर, इसमें नो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. इसमें रिएक्टिव सिलिका चाहिए ही नहीं आपको. राइट साइड नो रिएक्टिव सिलिका, ठीक है. राइट बॉटम एश, पॉन्ड एश, लेफ्ट साइड फॉर कंक्रीटिंग. बस आज के टॉपिक में अगर आप ये स्लाइड समझ आ गई तो समझो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फ्लाई. IS 3812 2013 पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 गुड फ्लाई एश, पार्ट 2 not good fly ash, only for sand. But for fly ash को एक टेक्निकल नाम क्या है इसका, मिनरल एडमिक्सचर. क्या बोलते हैं सर इसको? Why we call it mineral? They come from mine. जो माइनिंग से आएगा उसको क्या बोलते हैं, मिनरल एडमिक्सचर. फ्लाई एश कम फ्रॉम कोल, स्लैग कम फ्रॉम हेमेटाइट और सिलिका फ्यूम कम फ्रॉम क्वार्टजाइट. दे कम फ्रॉम अर्थ. फ्लाई एश, स्लैग दे कम फ्रॉम द माइनिंग, अर्थ से, मिट्टी से निकलेंगे. इसलिए इनका नाम क्या हो गया, मिनरल एडमिक्सचर. दे ऐड इन द मिक्स. वन इज ए केमिकल एडमिक्सचर. दे आर प्लास्टिसाइजर, नॉट मोर देन 2%. IS 9103. IS 9103 they plasticize the concrete. They make concrete in a plastic condition. जैसे they increases workability. Chemical admixture, plasticizer, maximum 2%. Mineral admixture as per IS code, fly ash 30%, slag 50 to 70, सिलिका फ्यूम 5 to 10%. ठीक है सर. तो इसमें तो कोई डाउट हो तो पूछिए सर. अब केमिकल एडमिक्सचर क्या होता है सर? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. अर्लियर वी वर यूजिंग लिग्नोसल्फेट. ये जो लिक्विड सोप होता है ना सर, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज लिक्विड सोप आल्सो. इट इज ए गुड प्लास्टिसाइजर. इट इज जस्ट लाइक ए लिक्विड सोप. हाउ टू टेस्ट इट? टेक 1 drop of plasticizer in your finger. After 1 minute, your finger must stick with each other. Simple test. Take 1 drop of plasticizer in your finger, rub in your hand. After 1 minute, your finger should stick in. Second test, pH value. Third test, add 10 drops of plasticizer in glass of water. Shake well. You must get good foam. So these are the field tests I have shown you. Again I am repeating. 1 drop of plasticizer, rub in your hand. Your finger should stick. Put 10 drop of plasticizer in the water. Shake well. You should get good foam. Third is the pH. ठीक है sir. So nowadays 40% water is reduced if you are using PC based admixture. What is PC based? Polycarboxylic ether based plasticizer. So currently at every highway project we are using, these are costly. Earlier they reduced 10% water. So it means 40% cement can be saved. 40% better quality.
40% more durable if you are using a PC based part. 40% good finishing, 40% more cohesive material you will get. Okay, sir. So I have shown you what these are the performance, water reduction, first generation. These are the axles. Suppose you are working in Uttarakhand, Shimla, then you need a accelerator to increase the temperature. So these are the calcium nitride, calcium formate, lithium oxalate. So if you are working in South Chennai area, you have to use a retarder there. Modified derivative, hydrocarboxylic acid salt. These are the retarder also. Sugar is the best retarder. If you commonly used material, sugar as a retarder, calcium chloride as an accelerator. Calcium formate, calcium chloride, calcium salt act as an accelerator, and इसके लिए sugar. Or you can use alcohol also, which you drink. It is a good retarder. Half bottle drink, if you put, very good retarder. You can wait for 2 hours, 4 hours, nothing will happen. You know, sugar is also a carbohydrate. Now, coming to the nowadays, as you have seen, our ministers are as yesterday there was a seminar was going on. Today also seminar was going on. The Gadkari Sahab was there on innovative material. Now there are many IRC code. Whatever natural things we were having, they have been consuming day by day. We don't have natural material now. Now our Gadkari sir says, do not use steel. Use steel fiber concrete. Do not use natural aggregate. Use C&D waste, construction demolition waste, slag. I think Mr. Pandey will explain you. Slag cement use. But as per IS 383 also allows. Use all waste material. As per IS 383, which shows the specification of aggregate, they also says use fly ash as an aggregate also. Part 2 fly ash. How much? 100%. Reach 25% bottom ash. So fly ash in the DLC, 25% is allowed as a sand replacement. As a cement replacement, 20%. So 45% fly ash is allowed as per IS code also. Steel slag, iron slag, 50%. This is plain concrete. This is RCC. This is lead. So recycled concrete is allowed up to 20% in RCC also. Like for curbstone, for crush barrier, for post foundation, so we can use 20% recycled aggregate also. So please, this is coarse aggregate, this is for fine aggregate. So fine aggregate, iron slag, steel slag, copper slag, chrome slag, all are there. But there are 4 important properties. What are the properties? 4 important. Any waste material you can use, provided specific gravity not less than 2.1, not more than 3. Water absorption not more than 5. Chloride this much. Fly ash. So please refer IS 383 code. Recently there is a new code, 3 new code. One, guideline for use of construction and demolition waste, IRC 121, 2017. Another IRC SP 121. This is IRC 121. This is IRC SP means special publication. Guideline for use of iron slag, steel slag, copper slag, construction. So these are the one more new code has come, industrial waste, IRC SP 130. So I can show you a copy of this IRC SP 132. All the wastes are allowed now. You can see here. And how much quantity is being widely used in abroad also. You can see, you said, how many waste material. This is the copy of the code. It has been approved. It is published also now. So I am, because a member, I am using this use of industrial waste for embankment and subgrade only, as a filler only. You can use copper slag as a soil replacement, fly ash as a soil replacement, then Gerofix as a soil replacement, zinca, phosphogypsum, marble dust, other foundry sand, granule blast furnace slag, red mud, municipal waste. So you please refer this.
So because it is not pertain to our subject, my topic is today fly ash, but it is also a waste material. So please refer the latest code IRC SP 132. So we have 3 code. Now these are the new code. You can see this is the list of the latest code published in 2022. I was talking this IRC SP 132 guideline on use of, this is published in Indian Highway, August Indian Highway, you can see, sir. This is published there, and I have one paper also. You can read my paper also there. IRCSP 131, and there are so many other codes also. Coir geotextile, bamboos also, and main code is for bridges is IRCSP 30. Please remember, this is the, if you are anybody who is dealing a structure, so please refer to three latest code. For bridges, IRCSP 13, for minor bridges and culvert, for superstructure you can say, for IRC 78, for substructure, for foundation, IRC 78 2022 also, and IRC 112 2020 21. So please refer these the latest code for rigid payment IRC 15, and for road marking also IRC 67 and 35 2022 have come. And those who are dealing expressway IRCSP 99 also 2022. Because I am a consultant to IRC, so daily we are dealing with this code. So I thought I should apprise this. So expressway code 2022 has come. So please refer these are published in our Indian Highway. You can refer. Now coming to the silica fume and slag, there are 2 slags. Sir. One is air cooled slag, left side, and other is a granulated slag. When you take hematite ore, burn in the chimneys, sir, the slag, if it is quenched with water immediately, it is called granulated. It is a reactive slag. Means if you take hydrochloric acid, it will dissolve. If you cool the slag very, very slowly, it is called a air cooled slag. It is used only as an aggregate. They are very hard. So we have 2 slag, air cooled slag, slow cooled slag, only aggregate, and granulated slag, granules. छोटे छोटे 5-5, 10-10 mm के अगर आप ग्राइंड करेंगे, it is pure slag. It is used, it is parallel to fly ash. You can say fly ash and slag both are poisonous. If you want to use fly ash, if you are using a slag, same property. But if you are using slag, if you use fly ash, both are alternate, both are brothers, you can say. And silica fume is the eldest brother, then younger brother is slag, the youngest brother is fly ash. So we have elder brother silica fume, sir, younger brother granulated slag, and youngest brother fly. तो तीनों भाई हैं, तीनों पोजोलना है, बेस्ट सिलिका फ्यूम है, उसके बाद स्लैग बेस्ट है, लास्ट में फ्लाई एश. How silica fume is produced? It is widely being used in structure. Silica fume is the purest form of fly ash. ऐसे भी बोल सकते हैं. इसका बड़ा भाई है ना सर, इसका फादर है, तो उसके अंदर तो ज्यादा होगा. तो सिलिका फ्यूम is the purest form. It contains 90% reactive silica. फ्लाई एश के अंदर 90% और फ्लाई एश के अंदर 20%, तो 70% बेटर हो गया कि नहीं सर. तो सिलिका फ्यूम कंटेन्स 2 एडवांटेज. साइज ऑफ सिलिका फ्यूम इज 0.01, 100% पासिंग 45 माइक्रोन, और फ्लाई एश ओनली 45. ठीक है ना सर, ठीक है, तो क्लियर हो गया सर. तो अब सिलिका फ्यूम देखिए ध्यान से क्या होता है सर. वी टेक क्वार्ट्ज, वी टेक वुड. सिलिका फ्यूम इज आल्सो ए बाई प्रोडक्ट, जैसे फ्लाई एश है, ये भी वेस्ट मटेरियल है. इट इज ए वेस्ट मटेरियल ऑफ फेरो सिलिकॉन इंडस्ट्रीज. अर्लियर वी हैव वन फैक्ट्री इन हैदराबाद. टुडे आल्सो नव भारत फेरो एलॉयज. They were producing silica fume because silica fume is produced at a temperature 2000 degrees centigrade. In our country, electricity is very costlier, so we are importing silica fume. Silica fume का एक और नाम है माइक्रोसिलिका. Either you call it microsilica or silica fume, not silica powder. जो वो 10 रुपए kg है, ये 40 rupees kg है. Pure silica fume is a 40 rupees per kg. फर्स्ट यूज वाज बांद्रा वर्ली सीलिंग. ये देखिए
Bandra Worli ceiling, HC they have used silica fume. And if suppose northeast, you are working in northeast, like I am suggesting, suppose you are working in northeast, there is no aggregate good quality. Add 10% silica fume, you will get more than 3 times the strength. So by adding silica fume, your strength becomes almost 2 or 3 times. You can see the result here. This is a silica fume. This is 1 micron and this is 1 particle of silica fume. ठीक है सर, ये सीमेंट पार्टिकल है and this is silica fume particle. And how many codes are there on silica fume? 5-6 code. IRC 15 says use silica fume. IS 15388, IS 456, code of practice for roads, plain and reinforced concrete, IRC SP 70, bridges code, इसे आपको ना भी मिलेगा मेरा IRC SP 70, IRC 114, है ना, up to 10%. ये देखिए सर, we are using M200 grade concrete. M200 grade Bombay already has been used. 10% silica fume. Bulk density only 200 kg. Bulk density कितनी होती है सिलिका फ्यूम की? cubic meter और सीमेंट 1440 kg per kg. This is the picture of JJ flyover. ये देखिए सर, JJ flyover सिलिका फ्यूम भी, जब सिलिका फ्यूम कर सकते हैं तो फ्लाई एश भी कर सकते हैं. बोथ आर सेम, है ना सर. All hydropower projects silica fume has been used along with fly ash. All hydropower project, नाफ्ता जागड़ी, जेपी का भी, जेपी ने भी किया, बगलेहार जेपी का काम है. तो I was involved in Yamuna Expressway. I have used fly ash. I was involved since beginning to end in Yamuna Expressway. We have used fly ash at 3 places. Lakhs of cubic meter we have used. We have used fully in embankment. We have used fly ash in DLC. We have used fly ash in PQC 25%. So we have widely used fly ash in Yamuna Expressway project. Now, these are the waste material actually along with fly ash, and if you are using a construction and demolition waste, it will give you more help. So I think better I can skip this. This is only waste material. Now there is circular from the Ministry of Road Transport also. Please use, if in conventional concrete, please remember, if in conventional concrete, if you add 10% silica fume, the name of the concrete is called high performance concrete. क्या हो गया? Conventional concrete plus 10% silica fume is called HPC, high performance concrete, and minimum M200 grade. If you add along with it, if you add fiber in it, it is called ultra high performance fiber reinforced concrete or ultra high performance concrete. If you add fiber along with silica fume, the name of the concrete is ultra high performance concrete or ultra high performance fiber reinforced concrete. Only fiber you have to add, either steel fiber, जैसे आजकल गडकरी साहब कह रहे हैं, we have constructed one bridge in Pune, no steel, only steel fiber. So if you want, I can share there some circular also, and this is the so these are the just I have a presentation only. They have used silica fume in Pune. Now you are getting 30 megapascal fragile sensor. So this is the full presentation. I am not showing you. So है ना, तो ये है आपका अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट. इंडिया में ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड. तो ये कोई सतीश जैन जी हैं. अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इन इंडिया कंपनी का नाम है. फॉर मोर डिटेल यू कैन रेफर देयर, है ना सर. तो दे आर यूजिंग, and there is a circular from the ministry also, sir. There is a circular from the ministry also. If you use that, ये देखिए sir, this is the circular from the MORTH also. MORTH 22nd February 2022. ये बिदुर का जहाजी जो डायरेक्टर है आपके, तो देखिए इसमें IRC 112 का भी जिक्र है और इसमें 30 मेगा पास्कल तक आप यूज कर सकते हैं. 30 मेगा पास्कल फ्लैगवुड स्ट्रेंथ. M400 M500 ग्रेड कंक्रीट इज अलाउड. अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर इनफोर्स कंक्रीट. तो आजकल सिलिका फ्यूम काफ़ी ज़्यादा
अलाउ कर सकते हैं। फ्रेंच डिजाइन है ना। इसमें अगर आप देखेंगे, it is requested that the concerns of the letter may be brought to the notice of the all the questionnaire contractor submit a DPR using this material. This is a director your MORT है, तो आप इसको देख सकते हैं सर। So please refer this circular. कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 152 to 250 मेगापास्कल, फ्लैगुड स्ट्रेंथ 30 मेगापास्कल। कंक्रीट का कितना होता है 4.5, यानी 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। और देखिए सर, ये स्टील फाइबर जो पुणे, ये पुणे का ब्रिज है, नो स्टील सर। In this bridge, Pune ultra high performance fiber. This bridge is nowadays, Gadkari Saab, they have started making bridges without steel reinforcement. And one more alternative to this is FRP, fiber reinforced polymer, FRP. आजकल स्टील बार की जगह वो नया आ गया, नया कोड छप गया है FRP बार। देखिए ये गर्डर है सर, इस गर्डर में कोई reinforcement नहीं है, कोर कट किए, strength 30 मेगापास्कल है। So these are the steel. Now this is the future what you are going to do. इसमें कितना डाला है वो आपके सामने, ठीक है। These are the circular already I have shown you. There is a one more circular of the ministry, minimum 20% pre-cast you have to use it. ये देखिए सर, ये सर्कुलर है प्री-कास्ट का मिनिस्ट्री का, कि 20% में अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट करेंगे तो वेट कम होगा सर, फिनिशिंग अच्छी आएगी, है ना, नो रीइंफोर्समेंट। तो 20%, दिस इज द सर्कुलर 8 अप्रैल 2022 नेशनल हाईवे प्री कास्ट कंक्रीट पॉलिसी। तो आपको 20% और 25% आपको ये देखिए लिखा हुआ, द मिनिमम मैंडेटरी यूज ऑफ प्री कास्ट इज 25% ऑफ द टोटल कंक्रीट वॉल्यूम फॉर सब स्ट्रक्चर, फॉर ब्रिजेस, वायाडक्ट, आरओबी। अब आपको सर ये देखिए प्री कास्ट, तो प्री कास्ट कब बनेगा सर, जब अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, जितना भी प्रीकास्ट मार्केट में चल रहा है सब जगह हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो ये शॉर्ट में आप, अगर आप फ्लाई ऐश और सिलिका फ्यूम को कंपेयर करें, केमिकली बोथ आर सेम, केमिकली नॉट मच डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपके लिए दिखा दिया। ये स्टील फाइबर है, दिस इज पॉलीमरिक फाइबर, ये सिलिका फ्यूम है, ये फ्लाई ऐश है, ठीक है सर। ये देखिए फाइबर ऐसे दिखाई देंगे, ये दोलक, ये स्टील फाइबर से देखिए, यू विल गेट पोस्ट फेलो डक्टिलिटी आल्सो। अगर आप आरसीसी और स्टील फाइबर को कंपेयर करेंगे, इफ अर्थक्वेक कम्स, आरसीसी स्ट्रक्चर विल फेल डाउन इमीडिएटली, बट स्टील फाइबर स्ट्रक्चर विल नॉट फेल डाउन इमीडिएटली। इसमें क्या पोस्ट फेलो डक्टिलिटी होती है, ब्रेक होने के बाद भी वो पकड़ा रखी। जैसे आपके सामने ये देखो, एक ये टूट गया लेकिन इसने फिर भी एक फाइबर से ये टिका हुआ है, ये देखो, ये देखो इस तरह के ये फाइबर निकले। ये तो पॉलीमरिक फाइबर है। स्टील फाइबर तो इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल फाइबर, यानी अगर आप एनी फ्लाई ऐश कंक्रीट यूज करते हैं आपका स्ट्रेंथ कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 2% फाइबर डाल दो, 1% डाल दो, 0.5, तो आपका स्ट्रेंथ उतना कम पेयर हो जाएगा। तो फ्लाई ऐश भी यूज हो गया, फाइबर भी यूज हो गया, और स्ट्रेंथ भी एट पार आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये ऑलरेडी आप ये देखिए, ये वो है, ये प्री कास्ट। नागपुर में वी आर यूजिंग फाइबर इन प्री कास्ट आल्सो, सिलिका फ्यूम टू मेक प्री कास्ट। पूरे नागपुर का सर, ये नागपुर में प्री कास्ट का काम चल रहा है ये। अच्छा, अब आ जाओ सेल्फ कटिंग कंक्रीट। आई थिंक टी टाइम हो गया, 11:15 बजे का, 11:15। तो आई थिंक वी कैन ब्रेक फॉर टी एज सजेस्टेड बाय सुनील गुप्ता जी, नीरज जी, नीरज जी, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, हेलो, जी सर। तो यार थोड़ी देर बीच में बोलते रहो, पता नहीं लगता कि मैं खाली बोलता जा रहा हूँ। नेट की हमें थोड़ी समझ कम है ना, सर ब्रेक कर लेंगे, 50 मिनट का जुड़ा सर। हुआ है नहीं जुड़ा, वो कहाँ चला जाता है ये, ठीक है। तो 15 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर दोबारा कर लेंगे, जी ठीक सर, है। 11:30 ज्वाइन कर लेंगे। जी सर, प्लीज, हाँ 11:35 काइंडली रीअसेंबल सर, जी सर। एंड प्लीज ब्रिंग सम क्वेश्चन आंसर टू कैलिब्रेट ऑल द हॉट मिक्स प्लांट। और उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक ही बुक आपको पढ़नी है। अर्लियर वी हैव 3 कोड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। IRC वी हैव 3 कोड, IRCSP 48, IRCSP 58, IRCSP 11. All these codes are merged in IRCSP 112. This is the copy of IRCSP 112 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट। अब एक सिंगल बना दिया, रोड, बिटुमन रोड के लिए, कंक्रीट रोड के लिए, ब्रिजेस के लिए, देयर इज अ सिंगल कोड ऑन क्वालिटी कंट्रोल
of highway and the bridges. IRC SP 112 2017. IRC 112 is on the bridges. IRC SP 112 is on quality control. इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है. Everything is given. It is, I think, more than 1,000 pages. Who will do quality control? What are the duties of the client? What is the duty of the contractor? How to prepare RFI? How to take non-conformity? How to reply non? How to make test report? How to do calibration? Who will do calibration? देखिए जैसे plant है, hot mix plant, wet mix plant, batching plant, in house करना है, no external. Every 3 month करना है. ठीक है ना. Suppose you are having a temperature, you can do externally also, you can do internally also. तो NABL lab से करना है, in house करना है. तो everything is given. So please go IRCSP. Because of time I am just showing you one slide on IRCSP 112. ठीक है sir. Now if I am doing a bridge projection, now you have to check chloride content also by mass. By mass in pre-stress structure, pre-stress, this is other than pre-stress structure. If it is RCC, then 0.1%. If it is a pre, then 0.08%. Not 3.8%. Sulfate, 3%. Mineral addition in the case of bridges, concrete road में 20%. Here, in all bridge section, whatever IS code says, they exactly go as IS code. Whatever IS code, they simply write IS code. That's all. Silica fume IS code, slag IS code, fly ash IS 3812. ये पार्ट 3 रोंग है. ठीक है. मिनरल एडमिक्सचर, तो 3 मिनरल एडमिक्सचर है. ठीक है सर. और अब आजकल आ गया, अगर आप ब्रिज का काम कर रहे हैं, रोड का काम कर रहे हैं, आपने फ्लाई एश यूज किया और स्ट्रक्चर गिर गया, तो आपको ब्लेम देंगे. प्रॉब्लम मान लो जियो टेक्निकल की है. आजकल एक नया आ गया है IRC 123 कोड, जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन. आजकल काफी डिजिटल चला हुआ है. पाइल फाउंडेशन में CCTV कैमरा लगा देंगे, लोड सेल लगा देंगे, है, तो आपको पूरे पाइल का पिक्चर आ जाएगी. या अगर आप ऊपर एक पिक्चर देखेंगे, पहले आप SPT करते थे, बोरोल टेस्ट. इन प्लेस ऑफ SPT आप एक मोबाइल की तरह चीज लो, अप टू 40 मीटर डीप यू विल फाइंड आउट द स्ट्रेटा. ये देखिए, ये रॉक, ये वाटर, ये सैंड, ये हर चीज मिलेगी. अप टू 40 मीटर डीप यू कैन फाइंड आउट द कंपोजिशन. सो प्लीज रेफर द लेटेस्ट कोड आल्सो. फॉर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट Indian Institute of Science Bangalore. Indian Institute of Science Bangalore, they are giving more training on geophysical investigation and load cells also. Now, if you are doing a bridge project, by adding fly ash, if you are using a conventional concrete, 100% it will fail in a rapid chloride permeability because voids are more. If you are using fly ash, your specimen, one end put sodium hydroxide, other end put potassium hydroxide, the chloride are piped. Then water permeability, like on the deck slab, if you put water up to say 200 mm, it should not penetrate more than 25 mm. So for that, refer MORTH 1714 water permeability test. Specification are given. So by adding fly ash, whatever concrete you are getting, it is becoming high performance concrete along with fly ash or silica. So for MORTH 1715 also allows you to use fly ash or a silica fume also. Now, if you are doing a bridge project, please remember, you have to see, is it a moderate, is it a severe, is it very severe. Depending on this, you have to select this. Suppose I did the MIG design, I was doing a extreme condition, it means my MIG design is wrong. Because suppose minimum cement is M40, 400 kg per cubic meter. Minimum grade of M40.
whatever median I did, if suppose I did in extreme cases, that is wrong. I should take minimum M45 grade, minimum cover 75 mm, minimum cement 400 kg. So we have to follow this table also. This table is given at 3 places. This table is given in MORTH, this table is given in IRC 112 2020, and this table is given in IS 456 also. Same table. Life 100 years, 20 mm aggregate, cover, everything given. If you use 10 mm aggregate, if you use 40 mm aggregate, the values will slightly differ. Next slide. If you are using 40 mm aggregate, then 30 kg less cement. If you are using 10 mm aggregate, then 40 kg more cement. Suppose you are using here 10 mm aggregate, then cement needed is 440 minimum. Please see this portion. So for bridge portion, not for rigid pavement, you have to take extra precaution also. Minimum water cement ratio. Suppose it was coming 0.36, it is 0.35 wrong. If you are doing work in extreme condition, minimum water cement ratio should be मैक्सिमम वाटर सिमिलेशन शुड बी 0.35. ठीक है सर. तो ये आ गया. दूसरा ये देखिए क्लोराइड कितना है. दिस इज गिवन इन IRC 112. ये IRC 112 में है. वॉट एवर इज गिवन इन IRC 112 almost सेम थिंग इज गिवन. देखिए मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg other than fly ash, excluding fly ash. This is given in IRC 112 class 14.3.2.5 ड्यूरेबिलिटी चैप्टर. ठीक है सर. सो दिस आई हैव शोन यू IRC 112, कोपा बोलते हैं इसको, कोड ऑफ प्रैक्टिस. और देखिए दिस इज एज पर MORTH. सेम चीज MORTH में वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम सीमेंट, मैक्सिमम सीमेंट, एक्सपोजर कंडीशन, M40 ग्रेड कंक्रीट, ये अब रिवाइज हो रहा है. दिस इज अंडर रिवीजन सर. ठीक है सर. नाउ एनी स्ट्रक्चर टचिंग द ग्राउंड, pile foundation, DLC, any structure touching the ground, then you cannot use OPC cement. You have to use only fly ash cement if chloride sulfate is more than 2%. If in the soil chloride or sulfate is more than 2%, it is called coastal area 3, 4, 5. OPC cement is not allowed at all. You have to see during mixed design, minimum cement allowed also. Maximum water cement ratio, minimum grade also. So during mixed design, this table, any structure inside the ground, touching the soil. This table for superstructure. This is for girder, pier. This is for pile cap, pile. Pile cap, touching soil. ठीक है. Same thing is given in IS 456. Same table is given in IRC 112. Same table is given in MORTH 1700 section, है ना. और same table is given in IS code also. ठीक है. These are the minimum cover. लोड टेस्टिंग का अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो आई जस्ट नाउ आई हैव कंप्लीटेड वन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मेरठ एक्सप्रेस वे. वी डिड लोड टेस्टिंग जस्ट yesterday only. We found रिकवरी शुड बी 80. अगर आपका क्यू फेल है, कोर फेल है, मल्टीपल क्रैक है, यू कैन नॉट रिजेक्ट. फाइनली यू हैव टू डू लोड टेस्ट. इफ यू आर यूजिंग एनी फ्लाई एश, एनी मटीरियल, न्यू मटीरियल, इफ इट फेल्स, if it passes load deflection test as per IRC SP 51 2014, you have to accept the structure. During testing, any crack under loaded condition shall not be more than 0.3 mm in moderate condition and 0.2 mm under severe condition. Any crack inside the ground not more than 0.2 is allowed as per IRC SP 51 2004. Same table is given in IS 456 also. Almost same table. ठीक है सर. Now for quality control, please refer IRC SP IRC 112 2020 page 170. इसको आपको जरूर देखना है सर. ये देखिए सर, this is the copy IRC 112.
फॉर ब्रिज वालों के लिए आपका ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जरूरी है। अगर आपका क्यूब फेल है, बीम फेल है, हनी कोमिंग है, बिफोर डूइंग लोड टेस्ट विच इज वेरी कम्बरसम, यू हैव टू डू 3-4 टेस्ट। एक क्या है, रिबाउंड हैमर टेस्ट, दूसरा प्रोब पेनिट्रेशन टेस्ट, तीसरा बुलेट टेस्ट, तीसरा मैच्योरिटी टेस्ट। इसका मैं विद फिगर आपको दिखा दूंगा। दिस आई हैव शोन यू, दिस इज गिवन इन IRC SP IRC 112/2020। अब देखिए सर, इसमें ये देखिए, ये होता है पुल आउट टेस्ट, मतलब इसमें आधे कोर में एनीबॉडी कैन प्ले, हियर यू कैन नॉट प्ले। You put a spring inside it and pull it. You can find out by pulling compressor stand. ये pull out test है। ASTM number is also given. ASTM C900. बुलेट प्रोब पेनिट्रेशन टेस्ट, बुलेट टेस्ट, अगर आप बुलेट मारेंगे तो कितनी डेप्थ तक बुलेट गया वो हो जाएगा। मैच्योरिटी मीटर, व्हाट इज मैच्योरिटी मीटर? मेगा पास्कल आवर, every hour you can find out the compressor stand, maturity meter. So please, for bridge people, please do permeability test, please you chloride ion penetration test, maturity test, bullet test, pull out test, or NDT test, ultrasonic pulse velocity. If cube fails, core fails. If cube core fails, and you have to check within 15 days, if crack occurs, then you have to do this test. So for more detail, please refer quality control and workmanship, page 195 of IRC 11। ठीक है सर, ये दिस ऑलरेडी आपको बता दिया। फॉर ब्रिजेस 3% प्लास्टिसाइजर इज अलाउड, प्लीज हियर। फॉर ब्रिज पीपल 3% प्लास्टिसाइजर इज अलाउड है। ठीक है, बाकी सॉलिड कंटेंट ये सारा MORTH 1012 आल्सो गिव यू द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिसाइजर, कितना क्लोराइड है, कितना ड्राई मटेरियल है, प्लीज फॉलो दिस आल्सो। दिस इज द कोड ऑन सिलिका फ्यूम। देखिए सिलिका 85%, फ्लाई ऐश सिलिका 20%। तो दिस इज आल्सो यू कैन से फ्लाई ऐश, बट इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लाई ऐश। तो इफ दिस इज रिएक्टिव सिलिका 85% है ना, और फ्लाई ऐश में 20% होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका फ्यूम। अब दिस इज द कंपेरिजन, फ्लाई ऐश और सिलिका फ्यूम में क्या डिफरेंस है। इफ फ्रॉम ए थर्मल प्लांट द लास्ट स्टेज फ्लाई ऐश इज बेटर देन सिलिका फ्यूम, लास्ट स्टेज, लेकिन वो सारा दिन में ओनली ½ kg निकलता है। दे मिक्स ऑल द फ्लाई, सो इट इज पोजोलैनिक, सिलिका फ्यूम इज ए पोजोलैनिक। इट इज ए कंबस्शन ऑफ कोल, इट इज ए कंबस्शन ऑफ क्वार्ट्ज। ये 20 माइक्रोन साइज एवरेज, ये 0.1 माइक्रोन है। हियर सिलिका टोटल सिलिका अप टू 670 है, इसमें टोटल सिलिका अप टू 90 है। इसमें कार्बन कंटेंट 5%, इसमें नो कार्बन कंटेंट। इसका स्पेसिफिसिटी 2.2 to 2.8, इसका 2.25। इट प्रिवेंट्स एल्कली सिलिका रिएक्शन लेस, इट प्रिवेंट्स मोर। इट अटैक क्लोराइड सल्फेट, इट आल्सो इट रिड्यूसेस वाटर डिमांड, इट इंक्रीजेस वाटर डिमांड। तो ये है सर, ठीक है, बिकॉज ऑफ मोर फाइन। ये रिजिड पेमेंट है। इफ यू डू एनी वर्क, concrete work, most important part, if you are using fly ash, naturally it need more water. If you adding more water, rate of evaporation of water from any concrete structure shall not be more than 1 kg per square meter per hour. Rate of evaporation of any concrete shall not be more than 1 kg per square meter, यानी 1 स्क्वायर मीटर से अगर 1 kg वाटर इवोपरेट होगा तो वो स्ट्रक्चर क्रैक करेगा। एंड एज पर MORTH सेक्शन 602.3.4 स्लप कितना आएगा सर? 25 ± 50 मीन्स 10 mm to 40 mm slump at the time of placement as per MORTH page 271. So copy of this I have already submitted to Neeraj. So if you read any slide, everywhere I have tried to give class number, page number. If still there is some mistake, kindly go through it, please. है ना? So I have given regarding workability, regarding temperature. This is regarding rigid pavement. If you add fly ash or not, in both the cases, slump of rigid pavement is given 25 ± 15.
temperature of limitation. This you can follow for bridge structure also. The temperature of concrete should not be more than 35 degrees centigrade. When the ambient temperature 35, concrete temperature 30 degree. Ambient temperature means 1 meter above the concrete surface. Ambient temperature is 5 degree more than the temperature of concrete. The temperature of concrete shall not be more than 30 degree. No concreting shall be done when temperature of concrete reaches at paving site above 30 degree. No concreting is allowed. Or air temperature more than 35 degree, no concreting is allowed. If air temperature is more than 30 degree, temperature below 5 also, no concreting is allowed. If temperature of concrete, suppose you want to do some priority project, what we will do? If temperature is more, we can use ice plant. If temperature is less, we can use hot water. We can use hot aggregate. That's either hot aggregate, temperature not more than 60 degree. If you are using hot water, if you are using ice, temperature 0 degree, not minus, so that it should convert into water. And rate of evaporation one 026. This is the copy of लिखा हुआ ऊपर आ रहा है IS 10262 class calculation of cement or cementitious material. ठीक है, you have to increase 10% extra. दूसरा, ये already आपको बता दिया, we have used fly ash in Delhi metro also, because in metro project you have seen in front of Lady Shriram College there were multiple cracks because it is 1.5 meter thick structure, so too much heat of hydration. To reduce heat of hydration, they have replaced in all metro project 10% aggregate by part 2 fly ash as a replacement of sand. So we can use as a replacement of sand, as metro people already they are doing at many projects. Otherwise, for getting a sand in Delhi, you know, when we were making Yamuna Expressway, the sand was coming from Chandigarh. Coarse aggregate was coming from Gwalior. You can imagine Gwalior to more than 300 kilometers. So this is the condition today. You cannot, like when next generation come, I doubt whether they will be see the natural good quality aggregate with their own eyes or not. So today we must recommend, if code allows, fly ash, slag, recycled material, so they are helpful also. Lower heat of hydration, improve impermeability, improve durability also. So why not we should use? You know? So this is the case study. So IR, now coming to the dry link DLC, IRCSP 49, this allows 50 to 35. As per IR's DLC code, in place of 20%, we can use 15 to 35%. Fly ash, if you are using 2-day extra curing. If you are using fly ash, in place of 14-day curing, you have to do 16-day curing. Or if DLC, if you are doing 7-day curing, you will do 9-day curing. Please remember, if you are using fly ash, you have to do 2-day extra curing, whatever you are doing curing with OPC cement. Minimum cement, earlier it was 150 kg per cubic meter, now it is 140 kg per cubic meter in the revised code coming. Ratio of aggregate is to cement
In the case of DLC, shall be 15:1. Ratio of the DLC shall be 15:1. ठीक है सर? In the case of OPC, PPC है तो 10:1. Slag if you are using 25 to 50%. In the case of dry lean concrete, IRC SP49 is the code on DLC dry lean concrete, which we put below PQC, below PCC road. अब देखिए fly ash का case study. If you use fly ash and OPC cement, corrosion is 3 times more, 3 times less, 1/3. This is the, depending if you are using a PPC cement, you will get less corrosion. If you are using OPC cement, corrosion will be more. और देखिए सर, coming to the crack width. If crack width is increasing, corrosion is increasing. If you use OPC cement, the corrosion rate, it is 33, it is 77, it is 66. Here 271. यानी OPC cement, same crack width, less corrosion, more corrosion. Fly ash, again less corrosion, 170. ठीक है सर? तो आप you can see this is M20 grade concrete, this is M30 grade. OPC, PPC, OPC, PPC. So by adding fly ash, alternate wetting and drying, if you find the rate of corrosion rate, it is less if you are using fly ash. If crack width is more also, then these are the all code only on fly ash. If you want to use fly ash as per codal provision, so just I am not going through all the detail. IRC SP72 2 laning, sorry SP73 है, 2 laning manual. अब ये 220 आ गया. IRC 112, it is also 2020. MORTH, IRC 81, IRC SP89 stabilization, IRC 15 2017 आ गया. So these are the code we can refer for. Up. If you save 1 ton cement, please remember, if you are doing a World Bank project, you will get $8 extra rupee as a carbon credit. 1 ton cement need 1 ton raw material. 1 ton raw material produces 1 ton carbon dioxide in the air. तो ग्रीन हाउस गैस कमीशन. तभी आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं सर? वॉक अर्ली मॉर्निंग. Early morning, the plant releases oxygen, absorb carbon dioxide. At night, plant releases carbon dioxide, absorb oxygen. That is why at night, generally we do not walk in the garden. We walk early morning. So GIG means if you are putting more trees, they absorb carbon dioxide. If they do not absorb green gases, what are the green gases? There are 3 green gases which warm the global temperature: carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. These are the gases which come from the industries. To minimize these gases, which are creating pollution, which are creating global warming temperature. So if you are putting more green highways, if you are putting green highway, they will absorb these. Or if you use fly ash also, then also less use of cement also. These are the green technology also. You can say. Alternate to cement. Nowadays, new cement has come. If in the fly ash you add caustic soda, its strength is more than OPC cement. The R&D is going on. Many places in Chennai, I think Mr. Rajmani is there. He is the father of geopolymer. Rajmani. You can contact IIT Madras people also. Geopolymer is widely being used. The main component of geopolymer is only fly ash. Fly ash plus sodium hydroxide mixed together plus some other admixture, you will get almost same strength. People have produced a 40 grade concrete, no cement, only geopolymer. So please, these are the new things which have come. In geopolymer consists of fly ash, slag, silica fume or alkali activated. Now cement, you can use 40-50%. Immediately it will absorb. Micro cement is also available now in the
market, है ना? Now fly ash we can use in microcrete also. This is eastern periphery. When in eastern periphery, when we were working, some soil has come into the PQC, so we clean it. Then we put a microcrete, means same conventional concrete, 35% fly ash, because if it is a slow setting, na, it will give less crack. Low heat of adhesion will give less crack. High heat of adhesion will give more crack, because differential shrinkage. Here shrinkage will be less. So by adding microcrete is a nothing, only conventional concrete, smaller size aggregate, plus 20-35% fly ash also. How to do? Suppose these are the patches. We put Netobone. After putting Netobone, we apply the microcrete, finish it. This you can use for patchwork, or we can use for, this is Kavardha project, Chhattisgarh. Their longitudinal crack also, code says you can 40, 50 mm or 100 mm thick concrete, cut it, and we can do longitudinal crack repair also by partial depth repair. But you have to clean properly with compressed water. ठीक है, ये देखिए. Now MORTH pocket book, highway engineering, page 223. This code has come. देखिए सर, this is the code on rigid pavement. This is MORTH pocket book for highway engineer, 2019. Now you say composite cement has come. Same thing is coming in the MORTH also. Now there is a single code, OPC 269. Earlier there was, in the old Morse book, there are 3 codes are mentioned. 5% fly ash is also allowed. OPC cement, as per pocket book. Portland Pozzolano cement, which is the topic today, IS 1489. As per IS code, 10 to 35%. As per rigid pavement, 25. As per pocket book, they have increased 25. Plasticizer, composite cement, blended with slag and fly ash, IS 16415. Chemical admixture, maximum 2%, IS 9103. Mineral admixture, I have told you 3. Fly ash अब 25% हो गया. Fly ash use करना है, no 33 grade. 33 grade cement is not allowed in the DLC, not in the PQC also. Only 43 or 53 grade. GBFS up to this. ठीक है सर, तो ये आपको दिखा दिया सर. दिस इज द मोर सिलिका फ्यूम आल्सो एग्रीगेट, तो सब आपको मालूम है सर, एग्रीगेट पार्ट में चला जाएगा. सो एज पर MORTH आल्सो 1715 MORTH में 20% रिजिड पेमेंट, 20 फ्लाई एश यूज शेयर नाइदर बी लेस देन 20. यहाँ उल्टा हिसाब है. ब्रिजेस में मिनिमम 20 डालना है, मैक्सिमम 35. This is the section on the bridges. Pocket book rigid payment 20-25, but for bridges not less than 20, not more than 30. So page 556, 5th revision MORTH. ये देखिए आपका दिखाई दे रहा है 5th revision. ठीक है. Slag कितना 70%. Silica fume 10%. For bridges minimum cement 380 kg. Rigid pavement, minimum cement 360 kg. Rigid pavement, minimum cement 360 kg. Bridges, minimum cement OPC 380 kg. In case of rigid pavement, if you are using fly ash, minimum cement 310 kg. If you are using fly ash, minimum cement rigid pavement 310 kg. Here, whatever the replacement has come. But OPC content, Portland cement, not more than 450 kg. Water cement is fly ash and mixture up to 3% is also allowed. You can see it is given 170. ठीक है, देखिए, in case of bridges, target strength आपको टेबल 1704 से लेना पड़ेगा. टेबल इज गिवन फॉर टारगेट स्ट्रेंथ. ये ऑलरेडी आपको दिखा दिया सर. पंपेबल कंक्रीट, अगर आपको, इफ यू वांट ए पंपेबल कंक्रीट विदाउट फ्लाई एश, इट इज नॉट पॉसिबल.
Suppose you are going a pile foundation or other pumpable concrete. There you need powder. You can see here. Aggregate shall not exceed 1/3 of the internal dia. Two important points. If you are using a pumpable concrete, aggregate size 1/3 of the pipe, TME pipe 200, 250 micron particle, 50 to 35%. Suppose you don't have a sand, fine particle, then you can add fly ash. You need fine particles in case of pumpable concrete. Aggregate size 1/3 of the TME pipe. Passing through 125 powder, not less than 5%. यानी 5% तो पाउडर डालना है आपको. Admixture to increase workability. Set it order as per page 553. What is the difference pumpable concrete and cell containing concrete? बोलिए सर. What is the difference? In case of pumpable concrete, after 2 hours, your slump will become zero. प्लाटिसाइजर क्या करता है सर? इट क्रिएट टेम्परेरी नेगेटिव चार्ज. जैसे आप कोम्ब लेंगे, आप पेपर स्टिक करते हैं तो स्टिक द पेपर है ना. इट क्रिएट्स टेम्परेरी नेगेटिव चार्ज. इफ यू सी द केमिस्ट्री ऑफ प्लाटिसाइजर, इट इज सेम एज लिक्विड सोप. व्हेन यू वॉश योर क्लोथ, तो क्या करता है सर? व्हेन यू आर यूजिंग सोप, इट क्रिएट नेगेटिव पार्टिकल ऑन द डस्ट. व्हेन यू वॉश द क्लोथ, दे रिपेल ईच अदर. इसी तरह फ्लाई ऐश में इस तरह प्लाटिसाइजर जब आप डालेंगे, when you are adding 2% or 1% plasticizer, it creates negative particle, cement negative particle. They repel each other. The air is generated. That increases workability. So please see here, whenever you are adding curing compound, whenever you are adding plasticizer, whenever you are adding slow setting emulsion, they should adsorb, not absorb. Your surface should be wet. याद रखो. अगर आप क्योरिंग कंपाउंड डाल रहे हैं, प्लाटिसाइजर डाल रहे हैं और स्लो सेटिंग इमल्शन डाल रहे हैं, दे मस्ट बी डन ऑन ए वेट सरफेस. RS1 मस्ट बी ऑन ए ड्राई सरफेस, है ना. दे शुड एब्जॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब. लाइक इफ यू आर यूजिंग प्लाटिसाइजर, फर्स्ट ऐड 50% वाटर, देन इन द रिमेनिंग यू ऐड प्लाटिसाइजर. अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ द फ्लाई ऐश. फिर आप you will be giving blame to the fly ash. So whatever the conventional procedure is there, if you will not follow, the blame will come on the fly ash. So you have to take too much precaution while using. ये तो MORTH का ऑलरेडी बता दिया क्लोराइड कितना सर. ये देखिए, if you are using fly ash concrete, तो पेज 541, it will be within limit. आप सीवियर में ये करेंगे. अगर नहीं है तो फ्लाई एश यूज करो. You have to use fly ash then also. सल्फेट का लिमिट दिया. देखिए IS 456 भी वही बोलता है. IS 456 says cement content by weight of concrete. IRC code by weight of cement. IS code by weight of concrete बोलता है. IS code जो है 456, it says by weight of concrete. तो अगर आप by weight of cement निकालेंगे, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3 आ जाएगा. ठीक है सर. और इक्विपमेंट के लिए एक नया कोड आ गया सर, pocket book for road construction equipment. If you are purchasing any equipment, so please follow this code. These are the code. You can see all equipments are given, their specification are given. और आजकल तो एक नया चीज आगे जो सेमिनार चल रहा है आजकल, if you put some GPS in it, तो it will give you 3D picture of the road. जैसे आजकल कार में होता है ना सर, कार में कौन आगे आ गया, कौन पीछे आ गया. So you will get 3D picture of the road, how much passes you have done, how much density you have achieved, where it is. First it will show green color. When it will become red, it means full compaction अगर. तो आपको रोड का कहाँ नहीं रोलर चला या मोटर ग्रेडर नहीं चला, वो ये लोग भी शायद हम लोग we are trying to put it in the code. आजकल डिजिटल आ गया सर. Nowadays Trimble है, there are so many companies, they are selling some GPS. If you put that GPS in the scraper, motor grader, along with this conventional procedure, so you can do. I think GR Infra, they are using Bombay Delhi Expressway. GR Infra, they are using all the new equipment at site. If by using it, suppose your COD is very near, and if you use this thing, what they were saying, 75% time is saved, 25% production is increased by adding any new technology.
So these are the equipment, conventional, IRC 43 equipment for rigid payment, and pocketbook in general. All the code specification on the equipment. So please refer to code IRC 43 and pocketbook. Now, what is flag strength? I will just not take 10-15 minutes more. देखिए सर, रिजिड पेमेंट के लिए फ्लैग स्ट्रेंथ के 4 नाम है. फ्लैग स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रप्चर, beam strength, tensile strength. So try to understand how to find flag strength. Normally, people are doing some mistake at side. Everyone use flag strength equal to PL upon BD square. That is wrong. There are 3 formula to find out the flag strength. And one more thing, please remember, any structure whose length is 3 times the thickness, it is a tension member. Any structure, concrete structure, whose length is less than 3 times the thickness is a compression member. All paver block, they are compression member. Precast block, their length is not more than 3 times or 4 times the thickness. Any structure whose length is 4 times, 5 times or more, it is a pure tension member. That is why all our testing beam length is 5 times the thickness. We have 2 beam, 100, 100, 500, 150, 150, 700. Length is always 5 times the thickness. If you see our bridges, all cantilever portion, if you see any bridge, not more than 3 or 4 times the thickness. Any bridge cantilever. If you see any span of the bridge, not more than 3 times the pier head. If you see any bridge, his span is not more than 3 times the pier head. Any crack on the structure, rigid pavement or deck slab will come 3 times the thickness. If you bend a corner, the crack will come 3 times the thickness. Please remember this is the important point. If you are doing a testing, by testing a beam, you can check quality of the concrete also. Where crack occurs, this will give you the quality of the concrete also. If you are testing a beam, please remember, ये आपको चीज सर बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा. If you are getting a crack exactly at the center, name of this crack is called flexural crack. If you are testing a beam, if crack come near the support, it is called a shear crack. Flexural crack, shear crack. If beam failed by flexural crack, 100% excellent concrete. If your beam fails near the support, poor quality concrete, rejected concrete, not acceptable concrete. It is given in the code. If crack occurs outside the support, after 17 centimeter, medium quality concrete. Good quality concrete, if crack occurs. If crack occurs poor quality, where it is written, IS 516 2019. What it says, if crack occurs at the center, use this formula, PL upon BD square. B breadth 15 centimeter, D depth 15 centimeter, P load in kg, L the distance between the support 60 centimeter, 20 centimeter, 20 centimeter, 20 centimeter, 5 centimeter. So total length of the beam 70 centimeter, 700 mm. So 20, 20, 25 centimeter. If you are testing a beam, if crack occurs at the center, please use PL upon BD square to find out flag velocity. If crack occurs after 17 centimeter, then this formula. Same formula, except L 3A. Except L, only 3A you have to. Rest same. Minimum load for a 40 grade concrete, 25 kilonewton, 2.5 ton. Then it is M40 grade. For cube, minimum 900 kilonewton, 90 ton load. अगर आप क्यूब टेस्ट कर रहे हैं, minimum 90 ton or 900 kilonewton, then it will be M40 grade. Rate of loading, rate of loading
400 रेट ऑफ लोडिंग कहाँ से आता है? टायर प्रेशर से, याद रखो। जो भी रेट ऑफ लोडिंग होती है इट इज कमिंग फ्रॉम टायर प्रेशर। देखिए कैसे, टायर प्रेशर 7.2 लो, इक्वल टू PL BD स्क्वायर लगाओ, P कैलकुलेट करो, L 60 सेंटीमीटर, B and D 15. If you calculate P, it will come 405 or 402. So rate of loading is 400 kg per minute or 4 kilonewton per minute. 4 kilonewton per minute. Case 3, if crack occurs near the support, it is a poor quality concrete, rejected concrete, you have to discard it. If you want to say 1 minute video, how to find flagellation, you can see just this also. How to find. मार्किंग करना है सर, 17 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये 5 सेंटीमीटर है। हाउ टू डू बीम टेस्टिंग? ये 20 सेंटीमीटर मेजर करेगा, ये 5 सेंटीमीटर है। अगर क्रैक यहाँ पर आएगा आफ्टर 17 सेंटीमीटर, तब डिस्कार्ड करना है। अगर कोई हनी कूमिंग है, इमीडिएटली हैव टू रिपेयर सेंटर से। नो विल अप्लाई द लोड हियर, तो बहुत ज्यादा आ रहा है इसका। तो ये देखो, फिर इसमें आजकल क्या आप ई वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फटीग भी कर सकते हैं। ये दोनों का 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर ये 20 है, 5 सेंटीमीटर इधर वोल्ड लैप है, 5 सेंटीमीटर। ये आजकल जितना भी हाईवे प्रोजेक्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट एट साइड ओनली डिजिटल, रिबाउंड हैमर डिजिटल, पीएच वैल्यू डिजिटल, वर्नियर कैलिपर डिजिटल, बिकॉज योर डेटा इज सेव्ड। अगर आप नॉन डिजिटल लेंगे, इट इज नॉट गुड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। लाइक रिबाउंड हैमर नॉर्मली लेना, आजकल डिजिटल लेना, फिर पल्स वेलोसिटी डिजिटल, आजकल यूटीएम भी डिजिटल है। यू विल ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, अपने आप रीडिंग आएगी और आप यू टेक। ये फटीग मशीन आजकल देखिए, फटीग एनालिसिस करते हैं ऐसे से। ये ई वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपका ई वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब कोर, अगर आपका कोर कैसे कट करेंगे, देखिए सर, अगर आपका क्यू फेल हो जाता है तो आपको कोर कट करना है। कोर कट करके क्या करेंगे, कोर स्ट्रेंथ इज 25% लेस, वट एवर इज द crushing strength of the core, multiply with 1.25, it is called the cube strength. ठीक है सर। Now you have to multiply core, this you have to do if height is double the diameter. अगर height 300 है, dia 150 है, then whatever is the core strength multiply with 1.25. If height is not double the diameter, then you have to apply correction factor of height dia ratio. This is the equation which is given in IS 516 for finding the height dia ratio correction factor. N is the h by d ratio. Suppose height is 150, dia is 150, so h by d 1 आ गया सर। If you put 1 here, then 0.78 plus 0.18 is coming 0.89. So F is correction factor. So 0.89 into core strength into 1.25 is a cube strength from the core. और देखिए, sometime there is a fight or people say no sir, your beam strength is less. What you will do? Nowadays we can find cube strength from the beam also. When you are breaking the beam, the tension occur only at the center, your edges are strong. If you put one steel plate here, one steel plate at the bottom, just 12 mm thick, 150 by 150, do under the compression testing machine, reduce 5% strength, you can find from broken beam cube strength also from the beam itself. So this is also is given in IS 516, how to find compressive strength from a broken beam also. ठीक है सर। Now in case of rigid pavement, what is the minimum dia, sir? कितना लेते हैं बताइए?
एनीबॉडी हु इज डूइंग रिजिड पेमेंट सर, बोलिए. एनीवन हु इज डूइंग रिजिड पेमेंट, पार्टिसिपेंट सर, बोलिए सर. हेलो, एनीबॉडी इज डूइंग रिजिड पेमेंट एट साइट. हेलो, हेलो नीरज जी, पार्टिसिपेंट, जी सर. पार्टिसिपेंट है कि नहीं है? हेलो भाई, रिजिड पेमेंट, एनीबॉडी इज डूइंग रिजिड पेमेंट? हेलो, या यस या नो का तो जवाब देंगे ना. एनीबॉडी हु इज डूइंग रिजिड पेमेंट सर? नो सर. कोई भी फ्लेक्सिबल का कोई काम कर रहे हैं? फ्लेक्सिबल कितना डाया काट, फ्लेक्सिबल और रिजिड में अब ब्रिज का काम करते हैं, ब्रिज में कितना डाया कट करते हैं, और कंक्रीट रोड में कितना? 150 mm डाया वी कट इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, 50 mm डाया, 60 mm डाया वी कट इन द केस ऑफ ब्रिजेस. वाई? to find out the dow, to find out the cube strength from the structure, from the field. We use auto scanner, we use perfometer because it is a RCC structure. In case of bridges, reinforcement is there, we cannot cut core 150 mm dia. We cut core only of 50 mm dia. ठीक है ना सर? और 60 mm dia. और बिटुमन में क्यों कोर कट करते हैं सर? बिटुमन में कट कितना करते हैं? टू फाइंड आउट द बाइंडर कंटेंट, टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, टू फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडर. 9 किलो न्यूटन. ठीक है. और देखिए सर, अब ये क्लियर हो गया सर. अब इसका एक्सेप्टेंस क्या है सर? इसका एक्सेप्टेंस क्या है? 70%. एक्सेप्टेंस कितना? 1 क्यूब कैन बी 75% और एवरेज शुड बी 85%. अब एक नई चीज कोड के अंदर आ गया सर, ये IS 516 है. सपोज इन रिजिड पेमेंट you don't have a cutter for 150 mm, even you don't have a cutter for 100 mm, so sometimes people makes excuse, sir मेरे पास तो है नहीं. Now as per IS code you can cut any dia. आप 50 काटो, 60 काटो, 100 काटो, 200 काटो, 400 काटो, जितना मर्जी कट कर सकते हो. Now correction factors are given, so please refer 8.4 of IS 516 टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ कंक्रीट का. इसमें क्या है सर, ध्यान से देखिए. वो कहता है मान लो आपको 100 mm डाया का कट करना है, ठीक है, आपके पास 100 mm का नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप 50 mm कट कर दो, लेस देन 70, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1.06. ठीक है. नहीं सर मेरे पास तो 75 है, कोई नहीं, आप 75 कट करो, यू विल मल्टीप्लाई विद 1.03. नो सर आई एम हैविंग ओनली 150, तो आई हैव एक इक्वेशन बनी हुई है 25y प्लस 0.03 इंटू एक्स इक्वल टू 28. तो आप इसके x इज द डाया, y इज द करेक्शन फैक्टर, x डाया, y करेक्शन फैक्टर है, तो आप निकाल सकते हैं. और ये इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं. तो मैंने 2 पॉइंट्स आप इक्वेशन बना सकते हैं. आपके पास 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है सर आपके पास, 1 2 3. 100 पर 1 हो गया है ना, 70 पर ये आ गया, 50 पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. स्लोप आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया होगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं. तो ये इक्वेशन ऑलरेडी मैंने बना दी है, इसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं. ठीक है ना सर. तो अगर कोई भी अलग डायक हो, अब मेरा एक छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ कोड, बोलिए सर, वाई कोड सेज 75%, बोलिए सर क्या कारण है? वाई नॉट FCK +3, बताएगा सर कोई? वाई इन द केस ऑफ कोड सेज अगर आपका 75% भी क्रिटिस्टिक है, इट इज एक्सेप्टेबल. वाई इट इज सो? बोलिए सर, कौन बताएगा? फील्ड में 75, क्यू में FCK +3. वाई? द रीजन इज क्यूब आर बीइंग क्योर्ड फॉर 28 days. The contractor can ask, sir, you give me money for 28-day curing. You are asking only 14-day curing. How can I get FCK +3? एक reason. Second reason, while cutting core, 20% strength is reduced.
दो रीजन। तीसरा, it is not continuously cured, vibration is also going on, you will not get that strength. इसलिए हमने उसको क्या रखा है, अगर आपका 75 भी आ जाता है then it is acceptable. ठीक है सर। और दूसरा, whenever you are doing a concrete road core cutting, एक आप मिस्टेक करते हैं सर। क्या मिस्टेक होती है? You will never get accurate strength if you are doing a core testing. What is that mistake? When you are cutting a core, if you cut a core from the lower end, you will get 30% less strength. If you cut a core near the median, you will get 20% more strength. Why? When you are doing a laying of concrete, because of 2% camber, your water was coming down. Or in the bridges also, if you cut a core from the edge, you will get 20% less result. Because when you do vibration, air comes at the end. And this was told by Professor Sridharan, who was a metro man. He said 20% strength is reduced in the cover. Similarly, in case of CC road, 20% less. So what we should do, we should take at random, or from the median side we should take, not from the top, not from the bottom. Second thing, when you are cutting core also, it is at a 2% camber. What you do, you cut 20 mm, that is wrong. You have to make a triangle cut. Your top should be 90 degree at the bottom. If camber is there, and please use professional machinery for capping. 90% capping is not proper. Because of improper capping, you are getting less. Even similarly, cube also. Many times you have seen, if you are opening the cube, top you are getting a gap. If you are getting a gap, if you do testing, your contact area is not 225. Similarly, cylinder, if you are having a 2% camber, the contact area will not be that. You have to take a sulfur. ये देखिए कैपिंग मशीन है, एमिल का है, बड़ी कंपनी का आप ले सकते हैं। एमिल का बहुत अच्छा फिनिशिंग, बहुत अच्छा आएगा, स्मूथ। इफ यू टेक ए प्रोफेशनल थिंग, आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन द कटिंग ऑफ कोर। ठीक है सर। अब ये डीएलसी में is on dry lean concrete, 602 is on PQC, 1717 is on bridges, 1000 is on bridges. ठीक है, उसके दो हैं, आरसीसी और वो यहाँ पर। यहाँ की 600 पेज 255, fly ash either use port and Pozrana cement, and you have to get certificate from the company that fly ash in it is not more than 20% as per present MORTH specification. ठीक है सर। Now, if we are using fly ash, minimum cement 120 kg, PQC 310 kg, minimum M10 at 7 days, 1 cube 7.5 at present. But in the revised code IRC 15 2017, 7 megapascal at 7 day, 5 cubes average, 7 megapascal 7 day. अब 10 है, लेकिन अगर आप बॉन्डेड करते हैं, जैसे बख्तियारपुर में आपका काम चल रहा है, पटना में काम चल रहा है, इफ यू remove polythene sheet, then you have to cut joint in the DLC also. 99% DLC fly ash is being used everywhere in the country. जितने भी नेशनल हाईवे में बिना फ्लाई एश का कहीं नहीं बन रहा. इवन PQC also, most of the project they are using fly ash. In PQC 310 OPC and 80 kg fly ash. DLC में 120 kg OPC and remaining fly ash. Ratio aggregate 15:1. So this is, I have shown you this. और पॉकेट ये देखिए IRC 15 में मी 25% हो गया, पेज 27. दिस इज IRC 15 2017. ठीक है ना सर. देखिए DLC M7 मेगापास्कल 7 डे आ गया नए कोड में. आर PQC बॉन्डेड टू DLC 7 डे 10 मेगापास्कल, वहां कम नहीं करना.
एक्स्ट्रा क्योरिंग करनी है, वायर ब्रश लगाना है, बॉन्डिंग करना है. इफ यू आर गोइंग सोइल स्टेबलाइजेशन, मिनिमम CBR 15 है. So please refer the latest code IRC 15 is on construction of concrete road 2017, IRC SP 49 on the dry-in concrete, वो ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है ना सर. This already I have got. देखिए सीमेंट 602 PQC, फ्लाई ऐश कितना डालेंगे? 20%. सीमेंट 300 एज पर प्रेजेंट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज एज पर ओल्ड मोर्थ बुक, देन यू कैन नॉट पुट मोर देन, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट और DPR और feasibility report. So 20% fly ash is allowed only in the case of rigid pavement top layer cement, not less than 310. If you are not using fly ash, the minimum cement 360 for rigid pavement and for bridges 380 kg. Fragile strength 4.5, 0.7 under root FCK, or target strength 4.5 plus 1.65 into. So while doing MIG design for rigid pavement, you have to cast cube and beam both. ये severe condition already आपको दिखा दिया सर. This already I have covered. How much sample you will take, sir? How much sample you will take? Rigid pavement 150 kg per cubic meter. One sample from 150 cubic meter. In rigid pavement, one sample out of 150 cubic meter. Or in case of bridges, one sample per tipper. One sample 5 cubic meter. देखो कितना फर्क है. Because here life is 100 years, their life is 30 years. Here, average compressive strength, characteristic plus 3 megapascal. समझ, इसलिए मेरा जो सीमेंट है 43 मेगापास्कल है, 42 नहीं है, 47 नहीं है, बिकॉज आई हैव टू प्रोड्यूस कंक्रीट 43 ग्रेड. तो मेरा सीमेंट भी तो 43 होना चाहिए ना सर, इसलिए सीमेंट के नाम 43, 33 वी आर हैविंग ए 53. सो अप टू 50 cubic meter 4 sample you have to take. One sample means 3 specimen. Individual sample FCK -3. And if you are using a 40 grade concrete, one sample can be 37 megapascal. Average should be 42. Air content, fresh concrete, hardened concrete, 97.5. Yani 2.5% air is allowed. How to calculate air content? Specificity minus density divide by specificity into 100. Specificity वॉल्यूम प्लेस मेथड से, डेंसिटी ड्राई मास डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर एच, स्पेसिफिसिटी माइनस डेंसिटी डिवाइड बाई स्पेसिफिसिटी इनटू 100 इज कॉल्ड द एयर कंटेंट. तो 1% एयर से 6% स्ट्रेंथ. अभी डिक्शनरी में एक वर्ड है सर, अवॉइड. डिक्शनरी में एक वर्ड है अवॉइड. वॉइड शुड बी अवॉइडेड. वेदर इट इज ए सबग्रेड GSB, you must get compaction factor 97, 98, 2-3% air is allowed everywhere. And if suppose you are using less than the acceptable value, suppose M40 grade concrete, your designer say no, I have checked factor of safety, yes, little bit less can be accepted. In that case, you have to do reduced payment. Design strength, suppose 43 minus 42 divide by 43 into 100, less payment will be paid to the contractor. This, please refer, this formula is given on page 579. So MORTH page 577, अगर आप चाहें मैं दिखाता हूँ 577 देखिए. ये देखिए इस सैंपल, दिस इज MORTH स्ट्रक्चरल कंक्रीट, मिनिमम सैंपल 5, क्यूब FCK +3, कोर लेना है, कोराइड कितना है, डेंसिटी कितनी है, देखिए फ्रेश कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट, परमेबिलिटी देखो 25 mm लिमिट भी दी हुई है. डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कैसे निकाली है, 97.5, 2.5% एयर इज अलाउड, और परमेबिलिटी देखो 25 mm.
द मीन ऑफ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, अगर आप कोई भी ब्रिज का काम करते हैं विदाउट फ्लाई ऐश करेंगे तो मोस्टली एक्सीड कर जाएगा। विद फ्लाई ऐश में ये नहीं, इसमें आप यू विल गेट सक्सेस। ठीक है सर। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वाटर आप डेक पे भी करते हैं तो 25 mm से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए जब आप WC टेस्ट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ पेमेंट, स्ट्रक्चरल कंक्रीट शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन रिपोर्ट्स, ये देखिए फॉर्मूला ये दिया। सो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन पेमेंट, डिजाइन स्ट्रेंथ माइनस ऑब्जर्व डिवाइड, सो 562 पेज के हिसाब से जब तक आप थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टर को डांटेगा नहीं सर तो आपका वो कभी भी, या IRC 95 कोड है उसमें पूरी पेनल्टी क्लास ही है, IRC SP 95 कोड, पेनल्टी क्लासेस आर गिवन, प्लीज फॉलो दैट कोड आल्सो सर। ठीक है सर। अब ये कोड है सर सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है सेटिंग टाइम। लास्ट स्लाइड, सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट क्या होता है सर, आपको कब फॉर्मवर्क करना है, कब तक नीडल वाइब्रेटर लगाना है, तो मैं कोड के हिसाब से नहीं बताता, सिंपल तरीके से बताऊंगा। मेक ए कंक्रीट बॉल, ब्रेक इट एंड ज्वाइन इट, इफ इट इज ज्वाइनिंग इट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम, इट इज इन ए प्लास्टिक कंडीशन। ठीक है सर। मेक ए कंक्रीट बॉल, तो क्या अगर आपका इनिशियल सेटिंग टाइम है मींस अप टू 5 आवर एनी कंक्रीट वर्क, नो ज्वाइंट कटिंग, नो ओपन द फॉर्मवर्क, you can do placement, you can do needle vibrator, you can do initial coating, you can do finishing. Final setting time, if you are making a concrete ball and break, if it is not joining, या आप nail मारते हैं, you are not getting nail mark, it is the final setting time. It means joint cutting start, इसमें आप tining करेंगे, open the formwork, you cannot use needle vibrator, that is the final setting time. So 3.5 megapascal is the initial setting time and 27.5 megapascal is the final setting time. If you use this plunger, put this plunger inside the concrete, 25 mm, load divided by area is a setting time of concrete, not cement. ठीक है सर। तो ये इसके लिए बस ज़्यादा तो नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी टाइम इज ओवर। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो ये आपके सामने पिक्चर, always help baby girl, this is my personal advice. If you want to get a success, the baby girl should be happy. And अरे सर नीरज जी जी सर, जी सर। हेलो, 1 o'clock है 1:30 है सर 1 o'clock सर। ठीक है, तो टाइम हो गया ना। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, आपको चैट में डाला है किसी ने क्या? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी का एक मिनट क्वेश्चन है किसी का? फ्रॉम जय कुमार टू एवरीवन 10-9 स्ट्रेंथ क्या है? किसने, कोई क्वेश्चन है क्या? गुड मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू जी। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन, अदरवाइज आई एम राइटिंग बाई नंबर हियर आल्सो, यू कैन नोट डाउन, स्क्रीन पे लिख देता हूँ, है ना सर? जी इसलिए लेक्चर फिनिश हो गया। लेक्चर में भी वैसे होगा ये। हेलो नीरज, ऑडिबल है कि नहीं है? ऑडिबल सर। पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। हेलो, एनी क्वेश्चन प्लीज? हेलो सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए, कोई एक आधा क्वेश्चन पूछो भाई। हाँ सर, जैसे ओपीसी सीमेंट का तो स्ट्रेंथ होता है 33, 43, 53। जी जी। लेकिन पोजलाना सीमेंट और स्लैग सीमेंट का कुछ स्ट्रेंथ होता है कि? हाँ, ये खाली 33 होता है सर, ये जी। खाली 33 होता है।
होता और है ये खाली 33 ग्रेड होता है, 43 नहीं होता। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए सर, ये 33 का मतलब ये होता है कि 28 डे स्ट्रेंथ 30 मेगा पास्कल है। हमेशा याद रखो, अगर आप 3 डे में 30% स्ट्रेंथ आनी चाहिए, 7 डे में 70% आनी चाहिए 28 डे का। 3 डे में 30%, 7 डे में 70%, 28 डे में। तो ये जो ओपीसी सीमेंट है ये 33, 43, 53 है, ठीक है। लेकिन जो पोजुलना सीमेंट है, ये वाला जो पोजुलना सीमेंट है या स्लैग सीमेंट है, ये 33 ग्रेड है। ये हमको कैसे पता लगता है? 28 डे स्ट्रेंथ से। जो 28 डे स्ट्रेंथ होती है उसी का वो ग्रेड बोलते हैं। इसीलिए हम लोग कई बार M40 ग्रेड में पीपीसी सीमेंट को कई बार अलाउ नहीं करते। अभी कोड में भी फाइट चल रही है, कोड वाले बोलते हैं सर 43 ग्रेड पीपीसी यूज करो, हमारा सीमेंट नहीं यूज हो रहा। अगर ये करेंगे तो कितनी वैरायटी है। अभी भी आपको तो शायद थोड़ा मालूम होगा, आज की डेट में 150 सीमेंट है मार्केट के अंदर। इसके आगे लिस्ट मिलेगी आपको, 150 के करीब सीमेंट है मार्केट के अंदर। तो ग्रेड और बढ़, तो जितना भी पोजलाना सीमेंट है वो 33 ग्रेड है सर, ठीक है। क्लियर हो गया सर, है ना? और बोलिए एनीवन एल्स? और फ्लाइएज वगैरह यूज, हाँ बोलिए सर। सर वो ग्रेड लेस सीमेंट रहता है ना सर? ग्रेड लेस? हाँ सर, हाँ सर। ग्रेड लेस मतलब बिना ग्रेड का? ना ना ना, जो हाँ, पोजुलना वो सीमेंट कितना है स्ट्रेंथ आता है सर? 33 मेगा पास्कल। देखिए आपके वो भी सामने 33 है सर। हाँ ये भी आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, अभी आपको एक टेबल दिखाया था ना सर, ये हाँ सर, हाँ सर। ये जो 33, 43, 53 ग्रेड है ना सर, हाँ सर, हाँ सर। ये देखिए जो कंपोजिट सीमेंट है ये भी 33 ग्रेड है। हाँ देखिए सर। 3 डे 16 मेगा पास्कल, 7 हाँ, डे 22 मेगा पास्कल। और हाँ एक चीज और देखो सर, ये ग्रेड कहाँ से बनाते हैं पता है आपको? देखिए मैं आपको नई चीज दिखाता हूँ। अगर आपको ग्रेड कैसे चेक करते हैं, जो 33 ग्रेड का 28 डे स्ट्रेंथ है वो नेक्स्ट ग्रेड का 7 डे बन जाएगा। समझ गए सर? देखो ये 33 ग्रेड का 28 डे 33 मेगा पास्कल है, 43 ग्रेड में ये 7 डे बन गया, एक ग्रेड अप हो जाएगा, ठीक है ना सर? तो ठीक है सर, यानी थैंक अगर आप if you are doing a if suppose you are doing a building work, if you are doing a deck slab, तो suppose 14 days are over, तो आपको you have to find the ratio 7 day and 28 day during mid-day. तो at 7 day please check whether we are going in the right direction or we are going in the wrong direction. R value निकालते हैं ना हम लोग, R value should be minimum 70% तक आनी चाहिए। अगर 70% आ जाता है, 3 डे 30%, 7 डे 70% होता है टोटल। और फर्दर अगर आप इसका प्रूफ चाहिए आपको, तो आपका मोर्थ की बुक में अगर आप देखेंगे तो मोर्थ बुक में यू विल गेट द दिस टेबल आल्सो, हाउ मच स्ट्रेंथ यू शुड गेट। दिस टेबल विल हेल्प यू। एंड इफ यू आर डूइंग ए कंक्रीट वर्क, है ना, ऑल जॉइंट शुड बी कट विद इन 1 डे। प्लीज रिमेंबर, ये देखिए आई विल शो यू वन टेबल आल्सो, विच इज वेरी वंडरफुल टेबल दे हैव गिवन। जस्ट 1 मिनट। 900, ये देखिए सर, ये टेबल आपको मालूम है सर? दिस टेबल आई थिंक एवरीवन माइट बी नोइंग दिस टेबल, हाँ सर, हाँ सर। है ना? व्हाट डज इट मीन? देखिए सर, आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। हाँ सर। 0 डे स्ट्रेंथ, दिस इज 28 डे स्ट्रेंथ 100। If I consider 28 day strength 100%, it means after 2 days you will get 41% strength. Suppose I am using M40 grade concrete, ठीक है सर? तो 40 का 41% कितना आएगा सर? 40 का 41% कितना आएगा? 16 मेगा पास्कल, है ना? So at 2 day we must get 16 मेगा पास्कल, 4 day 60% of 40, 6 day 7 day, इन दोनों का एवरेज लेंगे। आफ्टर 8 days 77.2, आफ्टर 10 days 81, आफ्टर 14 days कितना आएगा? 87 पॉइंट। तो व्हाई वी डू क्योरिंग ऑलमोस्ट 90% स्ट्रेंथ वी आर गेटिंग आफ्टर 14 days. Now it is written in the rigid payment, joint must be cut from 2 megapascal to 8 megapascal, है ना? लिखा हुआ है ये MORTH में, joint cutting must start when compressive strength is 2 megapascal and it should finish at 7 megapascal. As per this Morth book, in 1 day
यू आर गेटिंग 7 मेगा पास्कल। देखो 2 डे में 41% है सर, तो 1 डे में 20% लेंगे एवरेज, नो सर, है ना। आफ्टर 1 डे यू विल गेट 20% almost, है ना। तो इफ आई टेक 20% of 40, it is coming around 8 मेगा पास्कल। तो एज पर MORTH, within 1 day all joint cutting shall be done. But this table has been revised now. Now this table says up to 90 days no age factor. Up to 90 days no age factor. After 90 days only 10% extra. This has been revised in IRC 15/2007. Correct, sir? And please use maturity meter. If you use maturity meter, every half an hour you can find out the strength. Maturity meters are available. It is just like a mouse. If you put mouse on the concrete, it will give you megapascal hour. Maturity equal to a strength into time. If you divide by time, you can find out the strength every 1 minute, every 5 minutes. Like girder also. So please use maturity meter. You can find out the strength. Okay. Any other question, please? Most welcome. 7 दिन में सर कितना होना चाहिए स्ट्रेंथ इसके हिसाब से? देखिए सर, हम लोग एक तो 67% ही लेते हैं। देखिए इसके हिसाब से 7 डे में कितना लिखा हुआ? 72% लिखा हुआ। मैंने आपको मिनिमम 70 थंब रूल याद रखा करो सर। अब देखो आपको कंक्रीट का थंब रूल बताता हूँ। आप मोबाइल से कैसे स्ट्रेंथ चेक करेंगे सर, बताओ। कंक्रीट का थंब रूल क्या है? आप 1 गिलास पानी डालो, विद इन 3 आवर्स वो उड़ जाना चाहिए। आप एक नेल से कटिंग करो M40 क्यूब पर, 0.2 mm से कटिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 8 kg का हैमर मारो उसके ऊपर, तो साउंड प्रोड्यूस 60 डेसिबल जरूर होना चाहिए। आप इसका प्रूफ, यू टेक M40 क्यूब, फर्स्ट डू ऑल द टेस्ट ऑन देम। आप कहा जाए, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5 टेस्ट थंब रूल हाउ टू चेक M40 ग्रेड कंक्रीट। फर्स्ट, put a glass of water on a concrete pavement or a bridge structure. If it evaporates within 3 hours, it is M40 grade concrete. Now there may be so many questions in your mind, sir, what is the temperature, what is the wind speed, what is relative humidity, how much area, how much height, and which temperature water. First you have to calibrate. Take M40 cube from the site, put a glass of water at the same site. If it is evaporating within 3 hours there, why not here? Then take a nail, put same cube, scratch 4 times. If it is cutting 0.2 mm, the concrete surface should also. So I have already checked this method. If you put water, it must evaporate within 3 hours. If you are putting a nail or a trowel, it must cut 0.2 mm. Aggregate visually more than 55% coarse aggregate. More than if it is more than 55%, it is a poor quality. You can use rebound hammer. Or most important test is take 10 gram concrete, 100 gram concrete, put hydrochloric acid, calculate cement content. If it is a M10, minimum cement 100 kg per cubic meter. If it is a M20, minimum cement 200 kg. If it is a M30, minimum cement 300 kg. If it is a M40, minimum cement 400 kg. Simple thumb rule. So please follow these thumb rule. You can find out the strength. ठीक है सर? Any other question? सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि अगर आपने बताया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर 10% से ज्यादा रहेगा फ्लाई ऐश में, तो हाँ, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो सर एक रिजेक्ट बार उसको नहीं, फिर से बता दें। रिजेक्ट नहीं बोला मैंने, उसका ना टेक्निकल एडवांटेज नहीं होगा। अगर आपका कैल्शियम ऑक्साइड से लिग्नाइट फ्लाई ऐश है, अगर आपका 10% से ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड है, तो उसका टेक्निकल सीमेंटिशियन ओपीसी का काम करेगा, वो ओपीसी का काम करेगा वो। रीजन क्या है? देखो मेरा पर्पस क्या है, जो लाइम लीच आउट हो रहा है उसको कंज्यूम करना। अब उसके पास ये जो लिग्नाइट फ्लाई ऐश है, ये अपने आप ही स्ट्रेंथ दे देती है, खाली इसके ऊपर पानी डाल देंगे तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा सुनो ध्यान से, एक लाइम फ्लाई ऐश के अंदर है, एक लाइम स्लैग के अंदर है, दोनों में फर्क है। जो उसके अंदर लाइम आता है, जो स्लैग के अंदर लाइम है, वो हनुमान की तरह है। जैसे हनुमान क्या करता है, उसके पास नॉलेज है, एनर्जी है, लेकिन उसको याद कराना पड़ता है।
है ना सर। हनुमान जी को याद करा दिया, तुम्हारे पास वो तो गर्म हो जाएगा। तो स्लैग के अंदर भी वही चीज है, स्लैग के अंदर जितना लाइम है वो सिलिका भी है, वो रिएक्ट तब करता है जब थोड़ा सा उसके अंदर कोई एल्कलीज आ जाता है। अगर थोड़ा सा एक बार उसको लाइम मिल गया तो जितना अपना लाइम है वो सारा रिएक्ट करता है। लेकिन फ्लाई ऐश के अंदर वो चीज नहीं, फ्लाई ऐश के अंदर आपको धीरे धीरे रिएक्शन करता है। ठीक है सर। तो 10% से ज्यादा है तो आपको फ्लाई ऐश यूज करेंगे, लेकिन उतना टेक्निकल एडवांटेज नहीं मिलेगा, एज ए सीमेंट रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ गए सर, है ना। सर ठीक है, मना नहीं है सर, मना नहीं है, आप यू कैन यूज, इट इज नॉट, आई डोंट से इट इज नॉट अलाउड, इट इज अलाउड। फ्लाई ऐश का मैंने आपको प्रेजेंटेशन देखा, दोनों अलाउड है सर। और बोलिए सर। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी इतना नहीं करेगा, है ना। एल्कली सिलिका रिएक्शन इतना नहीं करेगा, क्योंकि जो एल्कली सिलिका रिएक्शन के लिए क्या है, जो उसका लाइम है उसको कंज्यूम करना है ना सर, वो तो खुद ही उसके पास अपना मटेरियल है 10%। हाँ, वो स्ट्रेंथ जरूर देगा, परमेबिलिटी बना देगा, सम 50-60% प्रॉपर्टी देगा, लेकिन 100% प्रॉपर्टीज क्लास एफ फ्लाई ऐश के साथ मिलेंगी आप। समझ गए सर। ठीक है, डाउट क्लियर और नॉट। यस सर, राइट हो गया। और बोलिए सर, एनी अदर पर्सन प्लीज, खुल के पूछो भैया, अच्छा रहता है। तो सर एवरीवन इज टेकिंग इंटरेस्ट, थैंक यू जी। मैं सोचा शायद पत्नी भाई ऑनलाइन है ना, समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, आई डोंट नो। बोले जो समझाया वो समझ आ गया कि नहीं आ गया सर, क्योंकि है। हेलो, हाँ नीरज जी, सुनील गुप्ता जी। जी सर। हाँ सर, बोलिए, फर्दर पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर एक बार पूछ लो पार्टिसिपेंट से अपनी तरफ से, फिर हम बंद। नीरज जी। जी सर। पूछ लो ना एक बार पार्टिसिपेंट से अपने हिसाब से, फिर मैं बंद कर दूँ। Sir, I think this thumb rule is the conclusion of this presentation. I think. थंब रूल It's the conclusion of this presentation, sir. थैंक यू वेरी Very मच सर, useful. थैंक यू। Very useful. हाँ, अगर Thank you, कुछ sir. गलत कर दिया तो उसके लिए माफ कर देना भैया, कोई, ठीक है ना, कोई चीज गलत पढ़ा दी हो उसके लिए सॉरी। जो अच्छी लगी है वो ले लेना, अच्छी लगी मेरे को वापस कर देना। हमारा इंग्लिश जरूर थोड़ा कमजोर होगा, बिकॉज आई बिलोंग टू यूपी, तो इंग्लिश बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा, मे बी आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू जी, ओके। ठीक है, फिर फिनिश करते हैं। Thank you, sir. Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस फॉर एवरीवन।